प्रश्नकाल ये सर, ये प्लेकार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्लेकार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्लेकार्ड तुरंत निकाल ले, हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्लेकार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Obituary references. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Lalit Bhai Mehta, Shrimati Basanti Sharma, Professor M.S. Swaminathan, Dr. M.S. Gill, and Shri D.B. Chandra Goda, former members of this House. Shri Lalit Bhai Mehta passed away on the 8th of July 2023. He served as a member of this august House from 1999 to 2005, representing the state of Gujarat. Born on 30th of July 1937 at Wankaner in Gujarat, Shri Mehta rendered his invaluable service to society in various capacities, including as Principal of Arts and Commerce College, Wankaner, President of Wankaner Municipality, and as Managing Director of Rajkot Nagrik Sehkari Bank Limited. He was also deeply committed to the development of the deprived sections of society. In passing away of Shri Lalit Bhai Mehta, the country has lost an eminent educationist, a dedicated social worker, and an able parliamentarian. Srimati Basanti Sharma, a leading voice of women empowerment from Northeast, passed away on the 8th of September 2023. She served as a member of this august House, representing state of Assam
for 2 consecutive terms from 1991 to 2002. Born on 1st March 1944 in Tinsukia district of Assam, Srimati Basanti Sharma took keen interest in educating women and worked tirelessly for abolition of child labor. During her time in this hallowed chamber, she championed as a crusader for development of northeastern regions of India. In the passing away of Srimati Basanti Sharma, we have lost a staunch advocate of women upliftment, champion of the rights of children, and a model parliamentarian. Professor M.S. Swaminathan, father of Green Revolution in the country, passed away on the 28th of September 2023. He served as a nominated member of this House from April 2007 to April 2013. Born on 7th August 1925 at Kumbakonam in Tamil Nadu, Professor Swaminathan, a plant geneticist by education, laid a firm foundation for agricultural renaissance in India in 1960s. He earned global acclaim for his affirmative stand on sustainable agriculture, mainstreaming gender considerations in agriculture and rural development. As an able administrator, Professor Swaminathan led several developmental organizations in the country and abroad. His enormous contributions helped India to rise from a drought-stricken food importing country to being declared self-sufficient in food production in 1971. His seminal contributions were duly recognized through the first World Food Prize in 1987, Padam Shri in 1966, Raman Magsaysay Award in 1971, Padam Bhushan in 1972, and Padam Vibhushan in 1989, among others. In the passing away of Professor M.S. Swaminathan, the country has lost a true visionary, a groundbreaking agriculture scientist, and an able parliamentarian. Dr. M.S. Gill, a distinguished figure in Punjab's bureaucracy and politics, passed away on the 15th of October 2023. He served as a member of this House representing the state of Punjab for 2 consecutive terms from 2004 to 2016. Born on 14 June 1936 in the state of Punjab, Dr. Gill joined the prestigious Indian Administrative Service in the year 1958 and served in various capacities under Union and Punjab state government. Dr. Gill, an outstanding administrator, also served as the Chief Election Commissioner from 1996 to 2001. And it was during his tenure that electronic voting machines were successfully introduced in Indian elections. He also served as a minister in the Union Council of Ministers, holding portfolios of youth affairs and sports, and statistics and program implementation. Dr. Gill received several awards, including the prestigious Padam Vibhushan, awarded in the year 2000. In the passing away of Dr. M.S. Gill, the country has lost a capable administrator, a prolific writer, and an illustrious parliamentarian. Sri D.B. Chandregoda passed away on the 7th of November 2023. He served as a member of the Distinguished House representing the state of Karnataka from April 1986 to December 1989. Born on 26 August 1936 in Chikmalgaru district of Karnataka, Sri Chandragoda had an illustrious political career spanning over 4 decades. An advocate by profession, he had an illustrious political career which included being a member of Lok Sabha for 3 terms from 1971 to 1984, member of Legislative Assembly 3 terms, and Legislative Council of Karnataka. He was also a cabinet minister in the government of Karnataka from 1979 to 1980. In the passing away
of Shri D.B. Chandra Goda, the country has lost an able administrator and a distinguished parliamentarian. Honorable members, we deeply mourn the passing away of Shri Lalit Bhai Mehta, Srimati Basanti Sharma, Professor M.S. Swaminathan, Dr. M.S. Gill, and Shri D.B. Chandra Goda. I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Secretary General. Kind permission, I rise to lay on the table a copy of the Constitution 128th Amendment Bill 2023, passed by the House of Parliament during 261st session of Rajya Sabha and assented to by the President. Shri Rao Sahib Dadarao Danve. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजों को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री कौशल किशोर जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री वी मुरलीधरन. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Sri Brajlal. Thank you, Chairman, sir. I rise to present the following 3 reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Number 1, 246th report on Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Second, 247th report on Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and 248th report on the Bharatiya Saksh Bill 2023. The reports were presented to the Honorable Chairman Rajya Sabha on 10th number 2023 when the House was not in session and forwarded to the Honorable Speaker Lok Sabha on the same day. Orders for the publication and circulation of the report were given by Honorable Chairman Rajya Sabha. Thank you, sir. Announcement. Honorable members, notices under Rule 267 received from Dr. John Britas, Sri P. Wilson, Sri Sandosh Kumar P. and Sri Binoy Vishwam do not merit any admittance. Announcement 2. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Fulo Devi Netam,
Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Sukhendu Sekhar Rai, and Shri Kartikesh Sharma. Announcement 3. I have to inform honorable members that a letter has been received from Dr. D. Virender Hegde, member stating that he is unable to attend the sittings of the current 262nd session of Rajya Sabha from 4th to 18 December 2023 due to his prior committed engagements. Does he have the permission of the House for remaining absent from 4th to 18 December 2023 during the current 262nd session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Honorable members, announcement number 4. Based on the recommendations of the Business Advisory Committee, a procedure is in place that members who wish to speak in a debate should give their names to the table office not later than 30 minutes prior to the commencement of a debate with the approval of their party leader or whip. The procedure is also brought to the notice of the honorable members through issuance of a para in the Parliamentary Bulletin Part 2 before the commencement of every session. However, honorable members, it has been observed that during the course of debates, requests are received from the members from various parties to participate in such debates, and at times without the approval of their party leader or whip. This practice causes difficulty in regulating the speaking time of parties as well as individual members. Honorable members are accordingly requested to kindly adhere to the stipulated procedure and send their names for participation in a debate at least 30 minutes prior to its commencement through their party leader or whip. Matters raised with permission. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik. धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे महाराष्ट्र में 16 जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलों के नुकसान के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, महाराष्ट्र में प्रारंभिक नुकसान अनुमान के मुताबिक हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर में फसल की क्षति 1.3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 3,93,325 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, इनमें से ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, यवतमाल और गढ़चिरौली के करीबन 96 तालुकाओं में बहुत बड़े पैमाने पे फसलों की हानि हुई है। प्रभावित फसलों में अंगूर, धान, केला, प्याज, सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल है। मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगा, 33% से अधिक क्षति पर जो मुआवजा तय किया गया है, उन किसानों को, क्षतिग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद की जाए। धन्यवाद सर। श्री जगेश। Thank you, sir. I'll speak in my language. Print desk ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ
ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು MNCಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದ ಜನರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಭಾಷೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद श्री जगेश जी. माननीय डॉक्टर फौजिया खान. Deputy Chairman, sir. Sir, the steep increase in screen time in early childhood years has become a growing concern in India. The advantage that technology has in education, entertainment, and communication cannot be denied, sir. But it has been observed that very young children who are still in their early childhood years are spending more hours in front of screens than required. This has been found to have a negative impact on their various aspects of their personalities, their vision, their cognitive, their intellectual, emotional, social, and also physical development, sir. Most children are addicted to screens, with mobile phones playing the roles of babysitters in families. Sir, excessive screen time beyond approximately 1 hour daily links to behavioral problems and poorer vocabulary acquisition. The surge in screen-based technology usage among very young children has raised concerns about its impact on mental health and overall well-being. A study reveals a connection between increased screen exposure from 6 to 18 months of age and adverse outcomes including heightened emotional reactivity, aggression, externalizing behavior. Such addiction may also lead to attention deficit hyperactivity, which is called ADHD, sir, and low academic output. Additionally, findings suggest that elevated screen time at 4 years of age is linked to lower levels of emotional understanding at 6 years of age. These observations underscore the need for a balanced approach to technology use to safeguard the mental health of young children, sir. To address these concerns, a comprehensive strategy should be implemented.
The development of a policy framework should prioritize setting permissible limits for screen time during educational activities as well. Parents need support in understanding the consequences and in managing the children's screen exposure, and this can be achieved through educational programs and resources that guide them on effective supervision. Additionally, sir, one more important point, workplaces should consider policies that enable parents to balance workloads and allocate dedicated time for their children, fostering a healthier balance between technology use and quality time in the family. Sir, this dual approach, combining educational reforms and supportive parental policies, aims to create a more conducive environment for the holistic development of children while acknowledging the role of technology in education. The greatest risk, sir, is that this increases the risk of online predators exploiting small children through child pornography and the like, sir. The government must therefore pay attention to this critical issue. Thank you, Fauziya. Very important issue. Mani Shri Santosh Kumar P. Thank you, Deputy Chairman, sir. I take this opportunity to demand the immediate release of rupees 5,352 crores center aid to the state of Kerala. It's the genuine share of the people of Kerala, and it is not anybody's generosity. And this amount includes 790 crores of rupees in the form of UGC pay revision, another 700 crores rupees for paddy procurement, and for healthcare it is 220 crores. So altogether it is 5,350 crores. And the state of Kerala properly submitted all the documents and made certain changes which were suggested by the central government. But even now, this huge amount is due to the state of Kerala. So I take this opportunity once again to demand the immediate release of the same. Moreover, sir, I would like to add one important thing, that the existing center-state financial relations must be redefined. According to the 15th Finance Commission, as it is rightly observed, states account for more than 62% of the total national expenditure. And these states are playing a major role in achieving the sustainable development goals. But whereas their income share is just 37%. This is a huge, glaring disparity, and this must be addressed within no time. And after the implementation of GST, states are also suffering with shortage of finance. So there is an immediate demand of revisiting, restructuring, or redefining our center-state financial relations. Otherwise, we cannot achieve the sustainable development goals. And I request the union government, I demand the union government to take note of this. And let me add one more thing. Kerala as a state is the worst sufferer. 15th Finance Commission provided for just 1.9% of the central taxes for Kerala, whereas at the time of 10th Finance Commission, it was 3.9% of the central taxes. So please note all these points and please redefine this center-state financial relations. Thank you. Thank you, Mani Shri Santosh Kumar P. Please. Those who want to associate, kindly send your names here. Mani Shri Shakti Singh Gohil ji. मैं एक गुजरात के मछुआरों का इश्यू आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूँ। हमारा गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में है। सर, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज़ फॉर 3 इयर्स, 3 साल से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं। पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है, और जब फिशिंग बोट्स वहाँ रहती है उसके अंदर से सारे पुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती है। इसी को चलते हमने
कुछ चीज़ें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीज़ें की थी। मैं आपके ज़रिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहाँ मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा, तो उसे कैद में मिलेगा, और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। वो शुरू हुआ था, इस सरकार की रेजिम में वो बंद हो गया है। एक परिवार का बंदा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके हालचाल भी परिवार नहीं जान सके, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हो, तो वो शुरू होना चाहिए। दूसरा हमने करवाया था, उस सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी मछुआरा फिशिंग बोट वहाँ गया और फिशिंग बोट वहाँ रख ली है, तो उसके लोन की जो किस्तियाँ उसको रोक दिया जाता था और उसको सब्सिडी फिशिंग बोट के लिए दी जाती थी, वो भी आज शुरू नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी और वहाँ पे हुआ था, पर राशि बहुत कम है, कि जो भी कमाने वाला जो है वो तो चला गया कैद में, और जनरली ये फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेंबर्स या कमाने वाले होते हैं वो साथ में होते हैं, वो चले जाते हैं, इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएं बचती हैं, तो उनको कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी, कि जीपीएस दिया कि जिससे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं तो वो वापस रहेगा। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। C&AG ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे फिशरमैन की सेफ्टी के लिए दिए जीपीएस सिस्टम के लिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से जीपीएस का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार की ये राशि थी, C&AG ने कह दिया है तो हम तो मानते हैं कि बहुत सीरियस चीज है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। थैंक यू सर। माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी। Thank you, Chairman. Thank you, Deputy Chairman, for giving me the time to speak on an important issue of farmers who are custodians of traditional seed varieties. So, India had rich agrodiversity. Scientist Dr. Richarya had documented thousands of valuable paddy varieties which were evolved and selected by our ancestral farmers. Though Green Revolution paradigm eroded this rich agrodiversity wealth, our farmers continue to conserve some of them in their farms. Despite great logistical hardships and financial hardships, these farmers are conserving thousands of varieties of different crops. Some have been recognized with the Genome Savior Award, which is a welcome recognition for their contribution. We also need to remember the role of women farmers. So, government needs to identify and support such, train them for maintaining genetic purity of seeds, characterization and cataloging under a scheme providing infrastructure facilities and stipends. Surely, government will agree with me, sir, that desi seed varieties and the farmers who conserve them need support so that it can then become the basis for spread of organic and natural farming. Sir, while George Fernandes, who led an aggressive campaign against the signing of GATT and WTO treaty, who was an inspiration for me, I am proud that in 2009, when the regulator GEAC approved BT Brinjal, it was again my party leader Nitish Kumar who opposed this. And the then Environment Minister, Mr. Jairam Ramesh, in 2010, ordered a moratorium on GM crops, which continues till the present government approved GM mustard last year, sir. In seed saving, natural and organic farming, I got trained by people like Dr. Debal Dev, who have conserved 1,400 paddy varieties, and Subhas Palekar, who makes Jivamrita out of desi cow dung, and the millet man of India, Dr. Khadar Wali, all of whom advocate desi seeds, sir. Two of them are recipients of Padma Awards by the present government. Each of them believe that there cannot be organic or natural farming without desi seeds. Definitely not GM crops. Thank you.
थैंक यू माननीय हेगड़े जी। माननीय श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपने एसिड अटैक पीड़ितों की दुर्दशा के संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। युवा लड़कियों और महिलाओं पर एसिड हमला समकालीन भारतीय समाज की एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं के दर्द से पीड़ित है और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में 1500 एसिड हमले हुए हैं। इस जघन्य अपराध से बचे लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से भी पीड़ित हैं। वे आजीवन भेदभाव, कलंक और समाज से अलगाव का भी सामना करते हैं। वे पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई महिलाएं अपनी चोटों और अक्षमताओं के कारण काम करने और आजीविका कमाने में भी असमर्थ हो चुके हैं। मैं सरकार से एसिड हमलों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने और लड़कियों और महिलाओं को व्यापक समर्थन एवं सहायता प्रदान करने का आग्रह करती हूँ। मैं यह भी निवेदन करती हूँ कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो, उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, उनको शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिले, साथ ही उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले और सामाजिक बदलाव के लिए भी हम कुछ अलग से प्रयास करें। सरकार से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि तेजाब हमलों के मामले पर 226 विधि आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी हमें तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు సార్. నా సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటిది ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్కు సంబంధించి జెన్యూన్గా పద్ధతి ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ను అనుసరించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ జరగవాలని చెప్పేసింది నా డిమాండు. దానిలో భాగంగా ఓటు హక్కు అనేటటువంటిది నిర్భయంగా వినియోగించుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం అవుతుంది. ఓటు హక్కు పరిపాలనా విధానానికి ఆయుధం వంటిది. ప్రజాస్వామ్యానికి దిక్చూచి అయిన అలాంటి ఓటు హక్కును కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా తొలగిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పక్షం వారు ఓటర్లు తొలగించడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనపడుతున్నది. అలాగే ఓటర్ల కోసం ప్యారలల్గా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చోట్ల ప్రాంతీయ సమాంతర వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీరాజ్ బదులు పంచాయతీ సచివాలయాలని, మున్సిపాలిటీలో గృహ సారథులని అనేక మందిని ఇట్లాంటి వాళ్ళను నియమించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ కార్యక్రమంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓటర్లలో తొలగించు కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తున్నారు. అది ముఖ్యంగా మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ జరుగుతున్నది. ఈ విషయంలో మాకు ఇంతకుముందు గతంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము. అలాగే ఉదాహరణకు అనకాపల్లి పరిధిలో 70,000 ఓట్లు తీసివేశారు, నర్సీపట్నంలో 17,000 ఓట్లు తీశారు, మాడుగుల్లో 9,500 ఓట్లు తీసివేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే దాదాపు 10 లక్షల ఓట్లు గోల్మాల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. వాటిని సరిచేయలేదు ఈ రోజు వరకు. వాటిని సరిచేయమని చెప్పేసి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లకి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. వాటిని తొలగించడం కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం ప్యారలల్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిధులకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓట్లు తొలగిస్తున్నటువంటి వైనాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ కూడా సరిదిద్దనందువల్ల మేము ఈ రోజున పార్లమెంట్లో ఇక్కడ లేవదీయవలసి వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు వజ్రాయుధమైన ఓటు హక్కును పౌరులకు లేకుండా ఎన్నికల్లో దొడ్డిదారిని గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మొత్తానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా దృష్టి పెట్టి మేము చెప్పిన అవకతవకలపైన వీటిపైన సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎలిజిబుల్ ఓటర్లను
ఎలిజిబుల్ ఓటర్లను చేర్పించాలని ఫారం 7 బల్క్గా ఇస్తూ ఓటర్లను తొలగించడానికి అధికార పార్టీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో వాటిని పరిశీలించి చేయాలని, తొలగించే ముందు ఓటర్కు నోటీసులు ఇవ్వాలని మేము ప్రత్యేకించి కోరుతున్నాము. దీనిపైన రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం దుర్వినియోగం చేస్తుంది కనుక వేరే రాష్ట్రాలను అధికారులను నియమించి थैंक यू. माननीय कनक महिला रविंद्र कुमार जी, स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो आपके कमेंट है एज पर रूल्स विल एग्जामिन वेदर इट विल गो और नॉट, प्लीज. माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी. Deputy Chairman, sir. Sir, the provisions for reservation were introduced in the Constitution of India to provide education and employment opportunities to the backward classes, that is BCs, so that they could be at par with others in the society, with other sections in the society. Sir, in fact, the Mandal Commission has recognized the BCs are historically marginalized and made recommendations to provide reservations for backward classes whose income is less than the mandated ceiling. Though the mandate other BCs whose income is higher than the mandated the labeled mandated limit were excluded, and they are called as creamy layer and excluded from the reservation, sir. Sir, the creamy layer was introduced and it was first raised to 2.5 lakhs in 2004, revised to 4.5 lakhs in 2008, revised again to 6 lakhs in 2013, and last revision took place in 2017 at 8 lakhs per annum. Sir, the enhancement is done to adjust for the inflation once in 3 years. However, the existing limit for creamy layer has not been revised for the last 6 years. During this time, the inflation increased manifold. Applying 3-year formula, the revision of creamy layer limit is twice overdue till now, sir. The delay in revising the creamy layer limit has denied the reservations to many needy and deserving backward classes, that is BCs. There is an urgent need to revise the income criteria. The Ministry of Social Justice also recommended increase the limit from present 8 lakhs to 12 lakhs of rupees. Therefore, I strongly urge the Union government to revise the creamy layer limit and ensure that 3-year interval of revising the creamy layer limit is strictly adhered to. This will ensure the true social equality for all BCs in the country. Thank you very much, sir. Thank you, V. Vijay Sai Reddy ji. माननीय श्री M. Mohammad Abdullah. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. This is my demand to reduce the beneficiary contribution of 10% while implementing Jal Jeevan Mission at villages with more than 50% of SC and or ST. Sir, the Jal Jeevan Mission, a program of this government and a crucial step towards achieving the United Nations Substantial Development Goal 6, which aims to ensure access to water and sanitation for all. Sir, what is the basic necessary for any lives? The good governance should ensure that all the citizens in India are getting access to water and sanitation. As per the government press release, 60% of the rural households, that is out of 20 crore, and 11.66 crore rural households are connected through functional household tap connection, and remaining 40%, that is approximately 9 crore households, yet to be connected, sir. Sir, the recent problem in this scheme is the revised beneficiary contribution. While launching this scheme, it is mentioned villages having more than 50% ST and ST population, where community contribution would be 5% of the capital cost. Recently, the ministry has increased the community contribution to 10% of the capital cost, and earlier it was 5% only. This has posed a difficulty in implementing the scheme now. Honorable Deputy Chairman, sir, SC/ST population in our country are the most marginalized and economically weaker section.
Good governance should empathize their situation and devise the scheme and guideline in favor of the citizens. Increasing the beneficiary contribution for the villages with 50% or more SC and ST households had reduced the interest of the people to avail this scheme, and no wonder this will be the bottleneck for this scheme implementation. Sir, I humbly request the Honorable Minister via this August House to take necessary steps to reduce the beneficiary contribution at these said villages down to 5% or nil. Thank you, sir. Thank you, Mani Mohammed Abdullah ji. Mani Sri Balveer Singh ji, Sant Balveer Singh ji. बहुत धन्यवाद उप सभापति जी, तुसी ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पर्यावरण का पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण जोड़ा सब तो मारू सिद्ध हो रहा, वो उत्ते असी संसद का ध्यान दिवाना चाहते हैं। सो गुरु नानक पातशाह ने अज तो 500 साल तो वध समा पहला जो उपदेश दिता सी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत। अज सारा विश्व ता एनवायरमेंट के पोल्यूशन तो पीड़ित आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 21,08,000 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ जो गुणवत्ता की गल करिए तो दिल्ली दे विच सिर्फ साल दे विच एक दिन हवा जिहड़ी है वो नागरिकां नूं शुद्ध मिली है। बंबई दे विच 5 दिन ते चेन्नई दे विच 15 दिन साफ हवा जिहड़ी है वो साह लैण योग सी। बाकी सारा पोल्यूशन दे नाल जिहड़ा है सारे असीं मार चल रहे हैं। सो असीं ध्यान दिवाउणा चाहुंदे कि 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 37.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਦਾ 1.37% ਕੁੱਲ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ हर कोई पोल्यूशन तो क्योंकि गुरु पातशाह का भै मनते हैं सारे। पर अफसोस है कि पंजाब सरकार ने पिछले साल एक सेंटर सरकार नूं सुझाव दिता सीगा कि जेकर इन्हां किसानां दी आर्थिक मदद की जाए तो ये जिहड़ा है पराली की अग नूं जिहड़ी लग रही है इहनूं रोकिया जिहड़ा है। दिल्ली सरकार तो 1500 रुपया जिहड़ा है वो सेंटर सरकार देवे किसानां दी मदद की। धन्यवाद धन्यवाद। Nothing is going on record. माननीय संत बलवीर जी 3 महीने का 3 मिनट का ही है ये 0 आवर, तो 3 मिनट, इसलिए उससे अधिक आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। प्लीज माननीय ऑनरेबल श्री P. Wilson. Sir, there is an attempt to thrust the Uniform Civil Code by the Union government on the people of this country. The Uniform Civil Code proposes a unified set of personal laws applicable to all religions, which would govern marriage, divorce, inheritance, and adoption. If the UCC is implemented, the current separate laws for Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Zoroastrians, Sikhs would be replaced by a common law. The question is whether the Union government is thinking of obliterating customs of all religions and kill secularism. India is a remarkably diverse country, encompassing a wide range of religious, cultural, and linguistic variations. Within Hinduism, numerous subcultures exist, each distinguished by its individual identity, traditions, and customs. Imposing a single set of personal laws on all religions, subsects, and denominations could potentially erode their distinctiveness and rich diversity.
Sir, the first casualty of UCC would be the Hindu tribes, especially from states like Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka, who have a unique customs and traditions, who are all protected by Article 371, A to H of Constitution, and the UCC would destroy these constitutional guarantees. The second casualty is freedom of religion, guaranteed by Article 25 of the Indian Constitution, not only for minorities, but also for the majority religion. Additionally, Article 29, which protects the rights of the minorities to preserve and protect the distinct culture, will erode the unique culture and traditions of minorities. Thirdly, UCC would affect the advantages given to the Hindu undivided family in property and taxation laws. Most religious treat marriages as a holy sacrament. UCC will reduce it to a civil transaction like property transaction and will destroy the sanctity of these sacraments. Tying a thali or mangalsutra or taking 7 steps around the fire or performing Sirdhartha self-respect marriages introduced by Peraringer Anna will be wiped out by UCC. Already the 21st Law Commission, after 2 years of consultation, recommended not to bring UCC. The Constituent Assembly itself assured while enacting Article 44 that unless there is a consensus by all citizens of this country, the Uniform Civil Code should not be implemented. I would like to urge the Honourable Prime Minister through this August House that instead of thrusting a Uniform Civil Code that wipes out customs, we should adopt a rights-based approach to bring in equal rights for women, children and disadvantaged groups by encouraging dialogues, understanding and bring in gradual reforms within communities through social engineering to weed out undesirable practices. It is through these means that we can strike a balance between individual rights, freedoms and communal harmony. I thank the Deputy Chairman for giving me this opportunity. Sir, you should listen to us than shouting, sir. Thank you. Please, no. Manishri, Dr. V. Udasan. Dr. V. Udasan, please. Please, nothing is going on record. Sir, please. Javakarji, please. Please. Manishri V. Udasan, please. Respected Chair, the painful incident has occurred in Silky You have to area speak for tunnel. 2 minutes because Mr. Sri Ajay Pratap Singh, Honorable Employee Associate. Sir, I am not here. Please speak for 2 minutes because Honorable Sri Ajay Pratap Singh will associate for 1 minute on the same issue. Sir, yes, there is time, sir. Sir, the Silky area tunnel incident, that is a very painful incident, sir. There, all security measures and the rule and norms are violated in that area. The company has violated, sir. Why this sad incident was happened? What was the inquiry report after the incident? Sir, this was not in the first time in that area. Earlier, 17 times it was reported. The workers already told that. So, the transparent inquiry, the fair inquiry is very necessary there. Sir, the entire world, in that day, 17 days, the 41 workers, they were in the tunnel. Sir, entire world was watched the incident. In that Silky area tunnel, the security violations, lot of violations are there, sir. There was no safety exist. Basically, the plan it was there, but really it was not there, sir. Then another thing, sir, the escape route was planned, but it was not it was not executed, sir. No trench gauges or safe tubes were not there, sir. Workers working in unprotected parts of the trench, so it should be ensured. The workers say that the fume pipes which were required per safety norms were not there. Sir, this gross negligence of the part of the company, it should be ensured. Sir, Please. 59 Honorable seconds. Ajay Pratap Singh will associate on the same issue. Sir, Honorable Ajay Pratap Singh, please, on the same issue for 1 minute. Please. आप लोग प्लीज, आपको मालूम है कि जो एसोसिएट करते हैं उन्हें 1 मिनट और जो मुख्य बोलने वाले होते हैं उन्हें 2 मिनट सेम इशू पर. दिस हैज बीन द प्रैक्टिस. प्लीज, यस, ऑन द सेम टाइम, सेम इशू, 3 मिनट्स. प्लीज आप बोलें. माननीय उपसभापति महोदय,
हमारे साथी पी शिवदासन जी ने जिस विषय का उल्लेख किया है उस विषय के संदर्भ में उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में पहले दिन पहला कदम रखा था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और इस घटना ने यह दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको चरितार्थ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय को, जनरल रिटायर्ड श्री वीके सिंह जी को और इस बचाव कार्य से जुड़े हुए सभी तकनीकविद, सभी सलाहकार, सभी रैट माइनर्स और सभी पक्षों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बचाव कार्य को संपन्न कराया है और सारे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। प्लीज 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 ऑनरेबल श्री एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, माननीय एब्सेंट माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी, माननीय श्री अयोध्या रामी, माननीय एडी सिंह प्लीज प्लीज, प्रियंका जी प्लीज प्लीज सिट, आपका नाम नहीं है लिस्ट में, इट्स नॉट एक्सेप्टेड, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नो। माननीय एडी सिंह, माननीय एडी सिंह यू स्पीक, दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप बोले, आप बोले, बोले, आप बोले। The National Green, प्लीज माननीय श्री एडी सिंह जी प्लीज स्पीक। the National Green Tribunal in 2014 banned all diesel vehicles. Please, nothing is going on record. Shri A.D. Singh ji, please. The Priyanka National ji, Green do not Tribunal obstruct. 2004 banned all Please, diesel your name vehicles is not here. Please. older than 10 years and petrol ones older than 15 years. The ministry has also issued a notification in 2023 for deregistration and scrapping all vehicles owned by the central and state government that do not comply with NGT order. Delhi government has issued orders for deregistration and scrapping vessels. Further, we know that older vessels are at risk to road safety, consumes more fuel and pollute the environment. To tackle the problem, the government has come out with a vehicle scrapping policy. Under this scheme, the persons opting for scrapping the vessels get incentive in the form of reduced registration fee and road taxes besides the incentives from the auto industry. As per government estimate, at present there are more than 1 crore vehicles that are required to be deregistered and scrapped across the country, for which government has approved 70 registered vehicle scrapping facility, out of which 38 are operational. However, the situation on the ground level, particularly in NCR, is totally different. There are lakhs of vehicles, including government vehicles plying, which has breached the 10 years diesel and 15 years 10 years petrol and 15 years diesel mark, adding to the cause of pollution. The whole purpose of NGT order and the government efforts are defeated by this omission on the part of the concerned department to take action. It is high time that all end-of-life vehicles should be deregistered and scrapped. Thank you. Thank you. Please, please. Manya Priyanka ji, your issue is a state subject. It has been not allowed. Please, it's not going on record. Please. Manya Shri Ajodhya Rami Reddy, Manya Shri Ajodhya Rami Reddy, not present. Shri Niranjan Vishi, Honorable Shri Niranjan Vishi, not present. Honorable Shri Vaiko, Shri Vaiko, yes, you have given your issue. It's on concern for frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lanka Navy. You have given a subject for... Please, please. Sri Vaiko, please. You do not want to speak? You do not want to speak? So, Honorable Sri Alaram Karim ji, your issue is there. Mani Sri Alaram Karim, need to increase share of central government in various important government schemes like PMAY, etc. Please. Sir, Mr. Chairman, sir.
I have submitted Please, an you important continue. issue related with the financial position of Kerala. My colleague Santosh presented here that matter. With the development activities and other things, Kerala is facing acute shortage of finance. Sir, we request the Government of India to revisit the Financial Commission's definitions and the principle of fund allocations. Now, our borrowing limit is drastically reduced. And some public sector companies, those who have taken loan for their purpose, it is also calculated as state borrowing. Sir, that is a unfair practice. So far, such attitude was not taken against any state. Government of India's public sector, certain departments, particularly National Highway Authority, has taken huge loan. It is not calculated as the loan of Government of India. So these principles are to be revisited. And also the amount spent by the state towards land acquisition for National Highway, that is also introduced, taken by, borrowed by the KIFBI, a company constituted by the company. It is also calculated as a state borrowing. That is to be exempted from that calculation. And the decision... Question hour now. Question hour. Honorable members, the multimedia devices, MMDs, may not display the list of questions due to some technical glitch. Though it will be resolved very soon, the mics of honorable members may be switched off for a moment to reboot the system. Honorable members may kindly bear with the inconvenience. So now question hour. ठीक Those of the members who have an impression about it, I would be happy to receive them in my chamber and discuss the matter today itself. Question number 1, Shri Kartikeya Sharma. Please. Question number 1. Shri Kartikeya Sharma. Honorable Chairman, sir, through you, I'd like to ask the Honorable question number 1, please. Honorable Minister, Honorable Member Shri Kartikeya Sharma, Supplementary 1. Thank you, Chairman, sir. So I'd like to ask the Honorable Minister if the Ministry is considering to take any steps to safeguard the rights and the interests of the passengers of airlines, just like the rights of airlines and airline crews are defined. As there have been many instances that have come to light where passengers are mistreated, and especially older people and people who are first-time flyers coming from rural areas. So, in the name of safety and procedure, if the government and the ministry is planning... Be pointed. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ान योजना पर, और आपके द्वारा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि आखिरी शहर तक हम नागर विमानन क्षेत्र को हम जोड़ पाएँ। और पूरे देश में बहुत विस्तार हुआ है, 517 रूट्स वर्तमान में प्रचलित हैं, और इस उड़ान योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। एक नया उड़ान का सफ़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल के दिवस में भी हो पाया है, और इस सफ़र को हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी ले जाएंगे। दूसरे राज्यों में इसका विश्वास भी हम सदन को देना चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्न कार्तिकेय जी ने आज इस सदन में पूछा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ नागर विमानन मंत्रालय से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है।
सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था BCAS, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पे रखती है और सेफ्टी के लिए DGCA जो हमारी संस्था है, हर एक एयरलाइन और हर एक एयरपोर्ट के लिए कार जो सिविल एविएशन रूल होते हैं उसे इशू करती है ताकि हमारे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जो मुद्दा उन्हें उठाया है, कोई भी मिसट्रीटमेंट किसी भी पैसेंजर के साथ होगा जिसकी सूचना मंत्रालय को मिलती है, फौरन उस एयरलाइन या उस एयरपोर्ट दोनों को सूचित किया जाता है, जवाब लिया जाता है और जहां कोई भी एयरलाइन या एयरपोर्ट दोषी पाया जाए, पेनल्टी मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से फिक्स की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री कार्तिकेय शर्मा। Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honourable Minister whether the Ministry has considered opening of or increasing the number of pilot training institutes in the country given the increase in demand in the aviation sector. Honourable Minister. सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्तिकेय जी ने उठाया है। हमारा नागर विमानन क्षेत्र की विस्तारता आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम प्रचलित हो पा रहे। हमने इस संख्या को दुगना से ज़्यादा कर दिया है 9.5 वर्षों में और हमारी प्राथमिकता है कि इसे हम आगे जाके बढ़ाएं। हमारे एयरलाइंस की भी पूर्ण क्षमता आगे बढ़ने वाली है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन की ऑर्डर डाली है, इंडिगो ने 500 प्लेन्स की ऑर्डर डाली है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एक बैकबोन आवागमन के क्षेत्र में पूरे देश का हम बनाने वाले हैं। ये विश्वास मैं सदन में आपके द्वारा मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the Udan scheme has been designed to make air travel more accessible to common man. But there are problems in bidding process, and that is why we are not able to operate the way we should be in remote areas, sir. Nanded Airport is an airport which was constructed because the Sikh communities have a sacred place there. But Nanded Airport is not functional. I had written to the minister and he very kindly replied to me saying that Nanded Airport would be available for bidding in the list of underserved airports. And if any airline submits a valid bid for the routes connecting Nanded, the same shall be considered as per the provisions of the scheme document. So I want to know what happened about the Nanded Airport flights, because that's the flight we take to come to Delhi. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने मेरे साथ पत्रचार इस विषय पर किया है और हमारे सलाहकार समिति में भी ये विषय उठी है। प्रश्न यहाँ है कि एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था। कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी तो वहाँ थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे, पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है। कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस के तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फ़ीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया है। जो ATCOs हमने वहाँ लगाई थी उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी, नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवॉर्ड किए। मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं
और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय को भी कि इस एफर्ट पे हमें भी मदद करें, और अगर ये एयरपोर्ट वापस लिया जाए और महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन कर पाए और उसे ऑपरेट कर पाए, तो फिर ये रूट्स हम वहाँ प्रचलित कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री वी विजय साई रेड्डी। So close and so far. Sir, according to the CAG report, under Udan scheme, only 54 routes or 7% of the awarded routes managed to sustain the operations beyond 3 years concession period. Sir, can the government explain what steps are being taken to resolve the problem in respect of the other routes unable to finish their concession period? Honorable Minister. Sir, Vijay Sai Reddy ji, as always, has raised a very erudite question, and I shall endeavor to try and satisfy him. In every situation, sir, you can always look at a glass half full or a glass half empty. Vijay Sai Reddy ji proposes to look at it from a half empty viewpoint. We in government look at it from a half full viewpoint. These were routes and airports that had been wiped off the civil aviation map. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi ji that today under Udan Yojana, 76 airports that were never on the civil aviation map of India in its history have today reappeared on those maps. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi and the government that today 1.30 lakh passengers have travelled through Udan Yojana who could never ever dream of travelling on a plane before. It is only because of his vision that today 2.75 lakh flights have operated in India due to the viability gap funding that has been proposed and given by the central government for this scheme in particular. And it is only because of his vision that the northeast that was looked at as always Purvottar, the furthest point of India, from the periphery has been brought into the mainstream. And 9 new airports have been constructed in the northeast of India, of which 6 have been possible only because of the Udan scheme. As far as his question is concerned, I'd like to correct his data. This scheme has been proposed as a VGF scheme for 3 years, where viability gap funding is given for 3 years for an airline. We hope that post that, the route sustains itself. If it doesn't, then we have to look for new routes to add on to these schemes. That's why we have a target of 1,000 routes over the period of the scheme. Today, 517 routes have been operational. His data is slightly dated because he relies on the CAG report. The current data, I'd like to correct him, is 78 routes are still continuing after 3 years. 40% of the routes are operational, 15% of those are continuing after 3 years, and it is our endeavor that as India grows, as people grow accustomed to air travel, this will only increase in the days to come. Our projection is that from 144 million travelers in 1920, by the year 2030, India will have 42 crore travelers by civil aviation in the days to come. Sri Rajiv Shukla, 5th supplementary. मंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत तमाम कनेक्टिविटी तो बनवाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसिलेशन लास्ट मिनट पे जो होता है फ्लाइट्स का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक, उनको लोड नहीं मिलता, इस वजह से जो एयरलाइंस है तुरंत लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन कर देती है। दूसरे, अभी फॉग आ गया है, और इसमें जो है कैंसिलेशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय उठा रही है सरकार, अगर बताने की कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब विस्तार में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पहले से ही। ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने उड़ान योजना के साथ नहीं, लेकिन समूचे नागर विमानन क्षेत्र के साथ प्रश्न उठाया है। जहाँ तक कैंसलेशंस का सवाल है, हम लोगों के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके आधार पर अगर कैंसलेशन होती है 1-2 घंटे फ्लाइट
कि पहले तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए इमीडिएट कनेक्टिंग फ़्लाइट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर 5-6 घंटे के लिए फ़्लाइट नहीं मिल पाती तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को होटल का कमरा देना, उनका रिफ़ंड देना, उनको अगले फ़्लाइट पर लगाना। तो ये नियम कार के आधार पर, सिविल एविएशन रूल्स के आधार पर निर्धारित है मंत्रालय के द्वारा। अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो मंत्रालय पूर्ण सतर्कता के साथ उस एयरलाइन के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्रवाई इमीडिएटली करती है। जहाँ तक फॉग का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजीव जी का, जो इस प्रश्न के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन एयरक्राफ्ट न हो, उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के, उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर स्केड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर स्केड्यूल करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर स्केड्यूल में हर एक एयरलाइन का स्केड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं, कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं, कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहाँ से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर स्केड्यूल में और 21-22 के विंटर स्केड्यूल में फॉग के ज़रिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो स्केड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या भी बहुत देश में बढ़ गई है, और कैट 2 और कैट 3 की भी, ताकि हर प्लेन का ऑपरेशन बोइंग 737, A319, A320, कैट 2-3 ट्रेन पायलट्स के आधार पे ही हो। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर। पानी की क्वालिटी को जांचने के लेकर, मापने को लेकर के कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जल शक्ति अब जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के बाद में देश भर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक तरफ जहां देश के सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। और जो काम प्रारंभ हुआ 2019 से लेकर के अब तक जो 16% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी जाता था, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज देश के 71% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। और पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है, इसके कारण से माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम कल देखा आपने कि प्रचंड बहुमत के साथ में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये जो पीने के पानी की गुणवत्ता और आर्सेनिक के को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, देश भर में 2016 में 14,143 ऐसे हैबिटेशन थे। माननीय सदस्य सही हैं कि इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक की समस्या है। 14,183 क्षेत्रों में हैबिटेशंस में इस तरह की चुनौती थी, जो 2017 तक बढ़ करके 18,258 हैबिटेशंस हो गए थे, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है, पानी की लेवल्स को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह का परिणाम आया है, उसके चलते हुए आज इनकी संख्या निरंतर घटी है। मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि 2017 से जो हमने नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन में जो प्रायोरिटी ऐसे अफेक्टेड हैबिटेशंस को देना प्रारंभ किया था, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक आज देश में एक भी ऐसा हैबिटेशन नहीं है जहां पर व्यक्ति को सेफ पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी उपलब्ध न हो। देश के जो है
इन 18,258 हैबिटेशंस में से केवल 378 हैबिटेशन ऐसे बचे हैं जिनमें से 319 पंजाब में है और 59 वेस्ट बंगाल में, जहाँ जो है कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था देश में नहीं थी माननीय सभापति महोदय, कि देश में पीने का पानी जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय, उसको जांचने का कोई किसी तरह का जो है देश में व्यवस्था ही नहीं थी। आज देश में हम खुशी के साथ में कह सकते हैं कि 2111 लेबोरेटरीज देश भर में काम कर रही, जिसमें से 1300 से ज़्यादा लेबोरेटरीज NABL एक्रेडिटेड है। और माननीय चेयरमैन साहब, देश भर में 19-20 तक जहां केवल 50 लाख टेस्ट कुल मिलाकर के होते थे पीने का पानी की गुणवत्ता को जांचने का, ये जो व्यवस्था हमने की और देश भर में 23 लाख महिलाओं को ट्रेन करके जो फील्ड टेस्टिंग किट दिए, लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता के विषय पर समाधान हो सके। लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रांत से आती हैं, मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य से कहूँगा कि अपने प्रांत में उस विषय पर बात करें। आज देश में, पूरे देश में केवल एकमात्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बचा है जो आज भी 40% से नीचे जल जीवन मिशन पर है। उस पर गति बढ़ाने की नितांत रूप से आवश्यकता है, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती मौसम नूर। Sir, I would request the Honorable Minister to give a specific answer on what is the total financial investment made by the Ministry in establishing community water purification as part of the arsenic mitigation efforts. Thank you. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, हमने क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए जहां क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जो जल जीवन मिशन का जो फंड एलोकेशन का जो हमने बेंचमार्क बनाया है, उसमें क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज़ को 15% का प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के क्वालिटी को लेकर के चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं। राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से ऊपर उपबंध करती हैं और कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अलग अलग तरह के जो है प्रदूषण को लेकर के उसके मिटिगेशन के लिए अलग अलग तरह के उपबंध उसके लिए किए जाने की आवश्यकता होती है। Honorable Minister, it's a very pointed question. I know, I'm replying so direct pointedly. Response. She wished to understand about, she wished to know about the community water treatment water plant to mitigate the arsenic. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी सूचना राज्य सरकार से मंगवा करके हम जो है माननीय सभा सदस्य को शीघ्र भेज देंगे। The Honorable Minister would get in touch with the Honorable Member to get all the details he wants. Supplementary, Dr. Fozia Khan. I'm so surprised. Sir, according to the risk of antimicrobial resistance, this is a significant global concern today. This issue extends beyond medical overuse, encompassing factors like water contamination from the pharmaceutical industry. Water waste treatment plants are pivotal in addressing AMR, which is a big concern. They serve as reservoirs and sources of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic-resistant genes. So recognizing various sources as potential routes for AMR spread, including recreational water, specifically in the rural areas, sir, in light of these challenges, what proposals or initiatives has the ministry put forth or intends to propose to prevent water seepage into this declining groundwater? Additionally, are there steps taken to monitor the levels of AMR in groundwater? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मैंने अपने पहले प्रश्न के जवाब में भी कहा है कि भारत में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल और व्यवस्था ही पहले नहीं थी कि पीने के पानी की जांच की जा सके। और व्यवस्था न होने के चलते हुए सामान्यतया शहरी परिवेश में लोग अपने घर में इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और RO वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य थे। लेकिन क्योंकि इस तरह की व्यवस्था अब खड़ी की और पहली बार देश में सारे बेसिक पैरामीटर्स पर और सारे जो है सेकेंडरी पैरामीटर्स पर टेस्टिंग की व्यवस्था खड़ी हुई है, देश की सरकार इस पर अपनी दृष्टिकोण से निरंतर निगदृष्टि बनाए रखती है। लेकिन क्योंकि पीने का पानी और इसके इतर पानी जो है वो राज्य सरकारों का विषय है,
तो प्राथमिक रूप से इस विषय पर काम करने की, इस विषय पर निगरानी रखने की जो है वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर राज्य सरकारों के सहयोग के लिए तत्परता के साथ में खड़ी है। Well, I can appreciate monitoring of the Honorable Minister. His team came to me. I put them to a very strict test about my own village, my own house, and inquired, is there a null there? They could give details of my entire village. Question number 3, Sri Irana Kadadi. Honorable Minister, first supplementary. धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार भूजल स्तर और पानी के प्रदूषण के आकलन के लिए तकनीक का प्रयोग करके पूरे देश में तालुका स्तर पर भूजल सेंसर्स का एक नेटवर्क बनाने का क्या प्रावधान करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन साहब, नितांत ही गिरता हुआ भूजल का स्तर हमारे देश के लिए अत्यंत बड़े चिंता का विषय था, क्योंकि भूगर्भ के जल पर निर्भरता दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत की, और हमारी कुल मिलाकर के विड्रॉल जो है वो दुनिया में हम सर्वाधिक करते हैं। 25% दुनिया के विड्रॉल का अकेला हम भारत में करते हैं। हमारे पीछे खड़े हुए पंक्ति में अमेरिका और चाइना दोनों को अगर साथ जोड़ दें तो उनका भी 1.5 गुना पानी हम विड्रॉल करते थे, और उसके चलते हुए निरंतर भूगर्भ का जल हमारा जो है वो कम हो रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ कर के हर एक प्लेटफॉर्म पर इस पर से बात करना प्रारंभ किया, पंचायतों के सरपंचों को चिट्ठी लिखने से लेकर के जिस तरह से डिफरेंट इनिशिएटिव्स उनके लीडरशिप में लिए गए, और उसके कारण से एक जल चेतना का व्याप जो हुआ है, उसके चलते हुए भारत सरकार के जल शक्ति अभियान, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए अमृत सरोवर अभियान, और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने जिस तरह से अपने अपने यहाँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने अपने यहाँ पे गुजरात में जो इनिशिएटिव्स लिए थे, चाहे महाराष्ट्र की सरकार ने जो जल युक्त शिविर प्रारंभ किए, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश में हुई, इस तरह की सारी योजनाओं के चलते हुए अब भूगर्भ का जल का स्तर जो है वो बढ़ने लगा है। मैं माननीय सभी सदस्यों के माध्यम से देश को बहुत प्रसन्नता के साथ में ये विषय सूचित करना चाहता हूँ। ये 2019 से पहले जब जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री के रूप में बनाया, उससे पहले देश में कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में भूगर्भ के जल को मापने के लिए जो देश भर में नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क के माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी, और 3-3, 4-4 साल बाद में जो रिपोर्ट पब्लिश होती थी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती थी, क्योंकि 3-4 साल में जो है उसके ऊपर कोई उसमें बहुत सारा और एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता था। लेकिन पिछले वर्षों में पहले हमने 2 साल पर किया, और पिछले साल से अब हम प्रतिवर्ष जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित करने की क्षमता हमने डेवलप की है। और मैं इसके साथ ही अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कहना चाहता हूं कि 2023 में 2020 के बाद में जो डाउनवर्ड्स हमारा हमेशा घटता हुआ भूगर्भ जल का आंकड़ा आता था, जो 6000 से ज़्यादा ब्लॉक्स में हम मॉनिटर करते थे, हर साल हमारे क्रिटिकल जो है ब्लॉक्स, सेमी क्रिटिकल और जो है ब्लॉक्स और ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। पिछले 4-5 साल के परिणाम हुए कि अब जो है पिछले साल में 2023 की तुलना में, अगर 22 की तुलना में अगर मैं बात करूं तो 2023 की रिपोर्ट जो हमने 3 दिन पहले पब्लिश की है, आज उसके चलते हुए सेफ जोन जो है, सेमी क्रिटिकल से सेफ जोन ऐसे 127 जोन है। ओवर एक्सप्लॉइट से क्रिटिकल की तरफ आकर के पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, ऐसे ओवर जो है 27 ब्लॉक्स हैं, सेमी क्रिटिकल से सेफ हुए 127 ब्लॉक हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेफ हो गए ऐसा 1 ब्लॉक है, और ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेमी क्रिटिकल हुए ऐसे 4 ब्लॉक्स हैं। इस तरह से 224 ब्लॉक्स में पॉजिटिव। रामी रेड्डी। Provide an assessment of the impact of artificial structures for groundwater recharge in Andhra Pradesh and share plans for scaling or modifying these efforts based on observed outcomes. Honorable Minister. मैंने सभापति महोदय, जैसा मैंने एक निवेदन किया कि क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को ही इसमें इनिशिएटिव लेकर के अपने प्लान्स बना करके और अपने योजनाओं को धरातल पर उतारना है।
भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसके लिए जो है वो सहयोग करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस पर निवेश करने के लिए जैसी योजना का प्रारूप है उस पर हमेशा ही उसके लिए जो है वो आगे बढ़ करके काम करने के लिए आतुर है। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the government aims to double ethanol blending in petrol by 2025. However, challenges are recently being faced in the ethanol supply chain, including disruptions in the rice supply. This is impacting ethanol manufacture, and projections are a 3.3% fall in sugar production. Honorable member. Sorry, sir. You had given me supplementary for question number 3. Okay, sir, I'm sorry. No, it does happen sometimes. I was not paying attention. Sir, India is the largest global user of groundwater, extracting 4.92 billion cubic meters annually, with 63% of Indian districts experiencing declining groundwater levels. This decline is directly correlated with higher poverty rates, estimated to be 9% to 10% higher in areas where groundwater tables fall below 8 meters. In light of this given situation, what specific measures has the ministry undertaken to identify regions at risk of low groundwater levels? And additionally, what initiatives has the ministry taken to raise awareness among farmers about the challenges associated with excessive groundwater use, considering the invisible nature of groundwater and the potential for unscientific extraction and over-exploitation? Honorable Minister. हालांकि मैंने अपने पहले प्रश्न के मूल प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तार के साथ में इस विषय पर उत्तर दिया था कि प्राथमिक रूप से ये राज्य सरकारों का दायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को लेकर के, ग्राउंड वाटर की बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर के, मुझे लगता है माननीय सदस्य का उस समय उनके संज्ञान में नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल में जिस तरह से प्रारंभ से लेकर अब तक इस विषय को लेकर के जन चेतना का जागरण किया है, आज उसके चलते हुए निश्चित रूप से जो है उसका प्रभाव ग्राउंड वाटर पे रिचार्ज जिस तरह से बढ़ा है उस पर हुआ है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि अटल भूजल योजना के माध्यम से हमने पहली बार देश में सप्लाई साइड से इतर हट करके जो है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करना प्रारंभ किया है, उसका प्रभाव भी अब ऐसे 7 प्रांत जहां चुनौती ज़्यादा बड़ी थी वहां दिखाई देने लगा है। मैं एक उदाहरण माननीय चेयरमैन साहब आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर जो है स्थानीय सरकार किसी शहर की तय करती है और वो अगर ग्राउंड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, रिचार्ज एक्टिविटीज़ पर काम करे, मेरे प्रदेश में डूंगरपुर एक शहर है जहां बहुत बड़ा तालाब आपके संज्ञान में आप जो है शहर के बीच में लेक होती थी जो सूख करके फुटबॉल का मैदान बन गई थी, क्योंकि पानी आज विज्ञान मानता है और 5000 साल पहले की भी हमारे जो है जो लेखों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जमीन का पानी, सतह का पानी, जमीन के भीतर का पानी और नदियों का पानी सब आपस में कोरिलेटेड है। तो वहाँ पानी, क्योंकि जमीन का पानी विड्रॉल ज़्यादा हो रहा था इसलिए वहाँ की लेक सूख गई थी। वहाँ के स्थानीय नगर पालिका ने ये तय किया और तय करके हर एक घर की छत के ऊपर होने वाले रेन वाटर को डायरेक्टली ड्राइड अप हैंडपंप्स के साथ में जोड़ा, एक छोटा सा फिल्टर लगा करके, और जब उस पर काम करना प्रारंभ किया तो वहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि आज उस लेक में जो है बढ़िया नौकायन किया जा सकता है। इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर सब राज्यों में, सभी शहरों में लिए जाएं तो उसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें मैं एक कॉशन भी रखना चाहता हूं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज़ के साथ में सेफ्टी को भी सब लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता हो, ताकि सेफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। हम एक्विफर्स को इस जल्दबाजी में कहीं कंटामिनेट न करें, लेकिन निश्चित रूप से इस दिशा में अगर समन्वित प्रयास होते हैं तो हम एक बहुत बेहतर भविष्य इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्री पवित्र मार्गेरिटा। Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House. Supplementary 1, Shri Pavitra Margeta. Yes, sir. My first supplementary is that the state of Assam has been producing oil for the last century,
And now my question is that how the people of Assam, the state of Assam, are getting benefit resulting from the oil production in the state of Assam, along with the CSR activities in our state. Honorable Minister. Sir, I'm particularly pleased that the honourable member has asked this question about the history of oil exploration in the state of Assam and its current state. I'm happy, sir, because Assam is the state where all this began. In fact, sir, it was in the year 1886 that the first oil well was dug at a place called Digboy. And, sir, the name Digboy is also very interesting because, as you will recall, sir, 1886, we were under the domination, governance of an alien dispensation, and it was the white master who was shouting, "Dig, boy." So from that Dig Boy came the Dig Boy oil wells, 1886, 1889. Sir, the first commercial scale oil well was produced and oil extracted. I think it was 200 or 20,000 gallons per day at Dig Boy, 1889, sir. And in 1901, the first refinery in Asia, not in India, but in Asia, came up in Dig Boy, sir. So I'm very happy, sir, because today we've come a long distance from there. Today, the state of Assam produces 4.2 million metric tons of crude oil, which accounts for something like 14.38% of the total crude oil produced in the country. Equally, the state of Assam produces 3.6 BCM, billion cubic meters of natural gas, which accounts for 10.43% of the country's natural gas production. Sir, it is axiomatic that whenever oil is stuck in any state, both the state government, the state revenues, the people of the state benefit from it, and equally the country as a whole benefits from it. Oil and natural gas and other forms of energy which we are producing, biofuels, compressed biogas, soon green hydrogen, they will all contribute to our enhancing our energy mix and to save precious amounts of foreign exchange on account of importation. On the crude oil front, sir, we are, because the economy is booming, is growing. Last quarter, sir, 7.6%. Overall, everybody estimates we'll have a rate of growth of over 6.5%. We still import 85% of our crude oil and, sir, about 50% of our gas. The state of Assam, sir, in the year 2019 to 20 and 2022 to 23, the state government's revenues from the production of natural gas, and every state government gets revenues from energy production, it was 9,291.17 crores for the revenues which accrued from the production of crude oil, sir, and 851.28 crores respectively, sir, from natural gas. Sir, these are the revenues which came on account of the royalties that the state government got. But, sir, there are other attendant benefits which also accrue. For instance, there is economic activity, both direct, indirect employment creation. There are thousands of local people get jobs. Sir, and I've been Minister for Oil and Petroleum and Natural Gas only for 2.5 years or so. I can say that different states would like now to enter the energy ecosystem because there is revenue for the state, there is employment for the people, etc. Sir, I think the honourable member also asked about the CSR which accrues from this kind of activity. Sir, I'm going to check the overall figure, but I do remember that recently I was in Assam where I had the privilege of inaugurating a hospital which has been made by CSR funds, sir, Corporate Social Responsibility Funds, by ONGC. This is a hospital in Shivsagar, sir, and it cost 483 crores. Sir, the total amount of CSR activity which has come to the state of Assam from 2014 to 23
as a result of this is 1,600 crores, which has been spent by the oil and gas PSUs on CSR activity. And one hospital alone, which has CT scan, MRI, modular OT facilities, 483 crores. So, but the beauty of it is, this is a hospital situated somewhere, and it will cover a vast catchment area. Large number of other adjoining districts will also benefit from it. So the answer, sir, which I now have, the figure is 1,600 crores for the period between 2014 and 23. We have had in the country 8 governments that didn't have this period also. I was part of one. Second supplementary, Sri Pavitra Margarita. Thank Pradhan Mantri Narendra Modi ji for earmarking and investing more than 40,000 crore rupees in the oil sector in Assam. My question is, second supplementary question to Honorable Ministers, is that what are the major projects are undertaken right at this moment in the state of Assam in the field of oil sector by the PSUs, especially the city gas connection and ethanol production, etc. Honorable Minister. Particularly pleased that the honourable member has chosen to ask this question because particularly after 2014, there has been an acceleration and more so in the last few years of the kind of projects which have been undertaken by the oil and gas PSUs or as OMCs as we call them. Sir, amongst the various major projects with overall project cost, these are about 44,000 crores as the honourable member says. Out of this, sir, Numaligarh refinery expansion project itself is about 18,968 crores. The Northeast gas grid is 9,265 crores. The Paradeep Numaligarh crude oil pipeline is another 9,058 crores. And the NRLS, that is Numaligarh biorefinery, is another 4,200 crores, sir. Sir, these are the projects which have already been sanctioned and where work is going on. The second component of the question related to ethanol. Sir, on ethanol as well, as the honourable member and others would be aware, sir, our ethanol or biofuels blending up to 2014 was about 1.5%. Sir, I was personally involved in the efforts which were made earlier. We had decided, rather than the government of that day had decided that they wanted 5% ethanol blending in at least 10 or 15 of our states and union territories. But with the best efforts in the world, sir, we didn't proceed beyond 1.4, 1.5% for a variety of reasons. I think in order to succeed in ethanol blending, you need to put in place an ecosystem which will make it viable both for the feed providers, for the production of ethanol and for its use. Today, sir, I'm very happy we had a target of 10% blending by November 2022. We were able to achieve that target 5 months in advance. Our second target, sir, was 20% ethanol blending by 2030. The Honorable Prime Minister, because of the success of this and his leading up front, we were able to bring that target of 2030 to 2025. Today we are in a situation, sir, we are already doing 12% blending. We will achieve the 20% blending 5 years in advance. For that we need 1,000 crore litres. And sir, we are already at about 580 or 600 crore litres. Insofar as Assam is concerned, sir, the oil marketing companies have signed 7 long-term offtake agreements for setting up dedicated ethanol plants with total production capacity of 1,150 kiloliters per day. The total financial outlay of these projects, sir, is 1,370 crore. In addition, sir, NRL is setting up a commercial 2G ethanol plant at Numaligarh, which is expected to be commissioned by 2024, that is next year. The capacity of this plant is 185 kiloliters per day, and its feedstock will be bamboo. The project cost, sir, is 4,200 crores. Sir, I would like to conclude my response to this supplementary by saying one of the most reassuring and heartwarming aspects of our biofuel program is that we have gone from this traditional sugarcane-based feedstock thing to
now second generation, that is to make ethanol from agricultural waste, parali, to make ethanol from bamboo, and Assam is leading the way in the production of 2G from bamboo, sir. Supplementary 3, Virender Prasad Basse. Your Thank you, supplementary, Honorable Chairman, sir. Thankful to Honorable Minister to give him the detailed history of Assam oil producing state. Thank you, sir. You are very right. Asia's first refinery was established in Digboi, Assam, and it was built by British rule. Sir, direct question. Sir, Supplementary. I'm coming to the question, sir. Assam is an oil producing state. It is known to you, sir. When British was ruled Assam, India, at that time, Digboi refinery was established, sir. But after long back, sir, when Congress was ruled in our country, to get a refinery in Assam, when India got freedom, we have to fight, we have to come to street, and we got the refinery in Guwahati, a mini refinery with production capacity only below 1 million tons, sir. But when this Narendra Modi government is coming, this government has taken lots of initiative, and now they have invested more than 80,000 in Numaligarh. Please ask your supplementary. Yes, Numaligarh refinery, 86,000. We are thankful to the Honorable Minister. Sir, by producing oil, Assam is getting royalty from the Union government. India is a oil deficit state, sir. We are importing crude oil from the abroad, sir. Now, I'd like to know from Honorable Minister, is Government of India seriously thinking about the increase of the royalty of crude oil production, which compare with the international? Honorable Minister. Very happy that the honorable member has decided through this supplementary to go deeper into the issue of earnings. And he wants serious response. And I'm going to give him a serious response with serious underlined. With serious underlined. Sir, the earnings of a state come from a variety of aspects of the ecosystem dealing with energy. Royalty is one aspect. Yes, as we increase our capacity, as more oil gets produced, as more oil gets refined, as the refinery expands. By the way, refinery expansion, we have currently 252 million metric tons per annum. We are going to take it up to 400. The Honorable Prime Minister met 450. So when you refine more, you'll get more royalty, without any doubt. But there are other aspects to this earning also. For instance, when we were able to complete 10% of biofuel blending by 2022, 5 months in advance, we were able to save 41,400 crores of rupees from the import bill. That enabled us to give 42,400 to our farmers. When we do 20% blending, it will be even more. Insofar as the state of Assam is concerned, I am not serious. I'm 100% sure that with the efforts which are being made to expand capacity, the efforts which are being made to produce and refine more, we just did an expansion of one of the Honorable Chief Minister tied me down in a public meeting. I agreed. We are expanding that refining capacity. So the more royalty will come definitely. But the issue is, there is more potential, including in other states of the Northeast. In fact, there is one issue between Assam and another state where there are some issues which we need to resolve. I myself feel that perhaps we have not exercised our, within quotes, our margin of persuasion, because oil is something, if you dig it somewhere, somebody, your neighbor may say, ki ye aap to nikal rahe oil, to hamari field se aa raha. We need to resolve these issues. But as I see this issue developing, the developments which have taken place, the expansion, the earlier honorable member also from Assam, he spoke about 44,000 crores, but that is now, even more is going to come, and I can sit down with the honorable member you can, as the representative of the people, tell the state government, I have an excellent rapport with your chief minister, with the other chief ministers. We are all working towards enhancing both the oil production, natural gas production, which will ultimately benefit both the people of the northeastern states and their union, sir. Fourth supplementary, Kamakhya Prasad Tasa.
सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ क्या वो विस्तृत से इसका आंसर दिया। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ONGC एंड ऑयल इसका प्रोडक्शन कितना है और प्राइवेटाइजेशन कितना ऑयल फील्ड को क्या हुआ है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन देने का मतलब है उन लोग का प्रोडक्शन, उन लोग को सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ONGC और ऑयल को क्या इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ने दिया? ऑनरेबल मिनिस्टर। Honorable Minister. Sir, the petroleum and natural gas sector has the benefit of both the private sector in exploration and production, and it also has the our OMCs, the marketing companies. Sir, how much is produced? I think we already have a in the body of the answer, sir, I have stated that the production of crude oil in India, million metric ton, just now is 29.2 million metric tons. Sir, oil typically, oil and gas, these are capital intensive sectors which have a large gestation period. Now, very often in the past, and I'm not looking at anyone or pointing fingers at anyone, when crucial decisions on investment could not be taken because there was this counterpoint of view that instead of putting in so much of capital expenditure, you're probably better off importing a cheap oil. Then of late there has been this other narrative, sir, which has emanated from the climate change discussions, the transition to sustainability. Globally, the investment in traditional fossil fuel, the entire system has dropped. But I can assure you, sir, we are doing things differently. There's now a concerted attempt along with the international oil companies with which we have signed the MOUs, our own OMCs, they're all collaborating, and we now have a situation where hopefully this figure of 29.2 million metric tons, I hope that by the time, whoever is the minister at that stage from the BJP government, after 2029, he will be able to give a figure which will be a multiplier of that, because I'm sure, I'm confident that the work which has been set up now and the exploration and production, all the incentives we've taken. To give you one example, sir, we have about 3.5 million square kilometers of sedimentary basin. But we never, for some reason I don't understand, we never exploited more than 6 to 7%. We are now taking this 6 to 7% exploitation of the sedimentary basin to double the amount. And the answer to the question, the body of the answer provides, in fact, specific details on what have been done in that, and I'll read out to the honourable member. It says specifically that we are taking increase the net geographical area under exploration from 2.5 lakh square kilometers to 5 lakh square kilometers. This plus the opening up of 1 million square kilometers, which used to be part of the no-go areas for a variety of reasons. Sir, and it's only the Honorable Prime Minister who could have taken this decision to free this up from resident objections of security agencies, defense ministry, etc. Today we are in the situation, we are looking at towards the period ahead where this figure of 29.2 million metric tons will be much higher, and that we will be able to reduce our import dependence even as our consumption is increasing. Shri Santosh Kumar P. Explaining the improvements made in this field. So may I know, will the government take any initiative to control the petroleum and natural gas prices? Honourable Minister. The honourable member has asked this. There are two ways of controlling prices, and clearly the model that we have been following, we have ensured that in the last 2 years, prices of petrol... विषयों पर सघन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी सघन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर बैठ जाइए आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर सुभाष सरकार जी।
आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। आइटम नंबर 6 श्री निशिकांत दुबे जी। सभापति महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी अस्थायी समिति के निम्नलिखित 3 प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में 246वां प्रतिवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध में 247वां प्रतिवेदन और तीसरा, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में 248वां प्रतिवेदन। सभापति महोदय, प्रतिवेदन 10 नवंबर 2023 को माननीय सभापति राज्यसभा को प्रस्तुत किए गए थे, जब सभा सत्र में नहीं चल रहा था, और उसी दिन माननीय अध्यक्ष लोकसभा को भेज दिया गया था। प्रतिवेदनों के प्रकाशन और प्रसार के आदेश माननीय सभापति राज्यसभा द्वारा दिए गए हैं। थैंक यू। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य उसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्स्थापित करेंगे। इंट्रोड्यूस शून्यकाल क्रम 1 श्री वैथिलिंगम वी INC। नेक्स्ट 2 श्री चंद्रशेखर साहू BJD। Sir, food is one of the basic necessities for sustenance of life, sir. Pure, fresh and healthy diet is most essential for the health of the people. Adulteration of food stuffs has so rampant, widespread and persistent that existing mechanism has not been enough for drastic remedy. So adulteration in food and food items is still a major issue that many come across in the country. It may not be visible to the naked eye, but the long-standing effects of such adulteration may impact one's health and well-being. The existing mechanism has so far not been able to make any drastic change to stop total food adulteration. The existing law enforcement agencies, may be of union government or the state governments, does not have enough manpower, mechanism and funds to check and stop adulteration of food and food items. Sir, we have also seen the results, outcome and achievements of FASAI in stopping the adulteration in food and food items so far in the country. And now the time has came for participation of each and every citizens of the country to stop adulteration in food and food items in the country. Like a movement made for Clean India, Swachh Bharat Abhijan, and make provision of sufficient funds to states for the success of this Abhijan against food adulteration. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 3, Dr. Abdul Samad MP Samdani ji. This is to draw the attention of this government through you, sir, through this August House, to certain very serious difficulties faced by the people in connection with the ongoing development work of National Highway 66, especially in my constituency, sir. Sir, the development work is very laudable, it is highly essential, and people have welcomed it, people have cooperated always with it, but they have certain difficulties
grievances with regard to the work that is going on. For example, sir, the intersection of Arikod-Parappanangadi State Highway with NH 66 at Kolappuram junction in my constituency is inadequately designed, necessitating an additional 5 kilometers of travel to various locations. Sir, proper design is urgently required. And sir, both the junction at Thade Chelari Road leading to Parappanangadi and the junction at Mele Chelari leading to Madapura lack sufficient space, and the conjunction in the junctions causes uncontrolled traffic block. Sir, long-standing demands from the public for flyovers or underpasses at Idumpuchola, Velimukku, Kohinoor, Pengoturmad and Parammal locations remain unaddressed and need a solution. Panchayat roads like Parappulakal, Kudimpattupadam have a level difference, and entry to the service roads is not feasible. Sir, there is a very serious problem related with the drainage in various places. Drainage and culvert outlets causing flooding in several places require proper connection to natural streams. Adequate arrangements for access from the highway to residential and commercial plots are needed. Sir, Kerala is a thickly populated area, so while making these designs and the plans, this factor had to be addressed at the very outset, but there are serious deficiencies in this regard, and people are facing serious problems. Sir, I urge upon the government to take a serious note of this situation and intervene in this matter for an urgent solution faced by people. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 4, Sri Jamyang Shering Namgyal ji. Item number 5, Dr. Sanjeev Kumar Shingri ji. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance in this August House. Sir, this is regarding reclassification of Kurnool city of Andhra Pradesh as a Y category city for the purpose of calculating HRA to central government employees. Kindly बैठ जाइए. Take your place. There are about 1,000 central government employees in and around Kurnool city who are serving the nation with dedication. आप बैठ जाइए. Sir, they are the employees of Ministry of Railways, employees of Department of BSNL, Department of Post under the Ministry of Communications, employees of Income Tax Department under the Central Board of Direct Taxes, Central Excise Department and Customs Department under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Central Bureau of Investigation under the Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances, Archaeological Survey of India under the Ministry of Culture, India Meteorological Department under the Ministry of Health, Art Sciences, and Kendriya Vidyalaya Sangathan under the Ministry of Education. Sir, there is a long pending demand for enhancement of HRA from 8% to 16%. This is a legitimate desire and right of the people. Sir, natural justice should prevail, which means that the government should fulfill their reasonable demand. This is a legitimate demand because Kurnool city has a population of 5.7 lakhs and the city has surpassed the 5 lakhs mark 5 years back. The issue is kept pending for want of new population census, which was due in 2021. Census could not be conducted due to various reasons, one of which was COVID crisis. Sir, we know that all government schemes are designed as per the projected population figures. Likewise, enhancing HRA based on projected population figures is very much reasonable and justifiable. As per the 7th Central Pay Commission, the CCI classification of Indian cities was abolished in 2008 and new classification of XYZ categories came into force. We have 8 X category cities wherein population is more than 50 lakhs. In 2011, 2 cities were upgraded from Y to X category. We have 97 Y category cities wherein population is more than 5 lakhs. In 2014, 21 cities were upgraded from Z category to Y category. Sir, Kurnool city has a population of 5.7 lakhs as certified by local municipal authorities and revenue authorities. So Kurnool deserves to be upgraded from Z category to Y category. The central government employees working in and around Kurnool city will be benefited, sir. Their HRA will be enhanced from present 8% to 16%. Sir, this justifiable demand of central government employees may be honored on humanitarian grounds.
I request Government of India to consider enhancement of HR of government employees of Kurnool region from 8% to 16%, pending actual census and reclassification of cities of India. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 6, Sri S. Ramlingam ji. Item number 7, Srimati Supriya Sadanand Sule ji. सर मेरे निर्वाचन क्षेत्र Sri item number 6, Sri Ramlingam ji. Sir, the state of Tamil Nadu and Andhra Pradesh have itself heavy rainfall in their coastal districts as a deep depression identified over the Bay of Bengal, moving northwest and evolved into a cyclone disjunct. It is expected that winds may touch with the maximum sustained speed of 90 to 110 km. In this context, it is important to highlight that state government in Tamil Nadu has taken adequate necessary steps. In this context, in order to further surplus the efforts taken by the state government, I humbly request the union government to grant sanction to extend the logistics and financial supports in Tamil Nadu in the event of unforeseen disaster management. Please kindly do the needful for necessary allotment from the National Disaster Management Fund. Thank you very much. Thank you. Thank you. Item number 7, Srimati Supriya Sadanand Sule ji. थैंक यू सर। जिस राज्य से मैं आती हूँ महाराष्ट्र और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती, वहाँ किसान बहुत दिक्कत में आए हुए हैं सर। बहुत सारे बारामती के जिले ऐसे हैं जहाँ ओले पड़े हैं और ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल बारिश इस साल हुई नहीं है और वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक जगह बहुत ये पूरा इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है इसके कारण किसान बहुत दिक्कत में आए। भले अंगूर हो, प्याज हो, केला हो, गेहूँ हो, धान हो, कपास हो, कोई भी सब्जी हो या सोयाबीन, कपास। आप यवतमाल जाए तो सोयाबीन या कपास की चिंता है। अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाए, नासिक में जाए, बुल्ढाना जाए, जलगांव जाए, वहाँ सब प्याज का किसान दिक्कत में आए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ ये इम्पैक्ट ज़रूर है कि बारिश और ओलों के कारण, नहीं तो सूखे के कारण। और दूसरी जगह दूध को भाव नहीं मिल रहा है सर। तो सारे जो किसान हैं महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत में है। तो हमारी मांग है कि महाराष्ट्र की सरकार ने लिखा भी है शायद केंद्र सरकार को, लेकिन यहाँ से टीम जल्द से जल्द महाराष्ट्र जाए और महाराष्ट्र को मदद करे और सारे जो महाराष्ट्र की मेहनत करने वाले किसान हैं उन सब का पूरा ऋण माफ़ हो, उनको कर्ज माफ़ी मिले और उनको पूरा जो नया कर्जा मिले। उसके लिए ये पूरा क्लाइमेट चेंज का मैनेजमेंट करके, एक्सपर्टीज करके आगे की किसान कैसा काम करे, इसके भी बड़ा इंटरवेंशन केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र के हर किसान जो मेहनत करने वाला है उसको अभी बैंक्स से भी मेहनत पैसे की ज़रूरत है, सरकार ने भी मदद करनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसमें हम सब ने मिलने काम करना पड़ेगा। नहीं तो जो किसान भले कोविड में हो या कुछ भी जब दिक्कत आती है तो वो उसके लिए कोई ना लॉकडाउन होता है ना उसके सुख दुख में कोई होता है। तो मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र के सारे किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 8, डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार जी। Vanakkam, Chairperson. Sir, regarding new railway line, which is a 75-year demand for the people of my constituency, Dharmapuri, connectivity between Morapur and Dharmapuri, which gives connectivity to Chennai. I'd like to thank the Union Railway Minister for having allocated 100 crores and started the railway network program. Sir, now there is land compensation and acquisition work going on, but there is a small problem in two places where there is land acquisition.
One is Mukunur, which is a marginalized society living over there. There are around 300 families over there which demand that the houses and the agricultural land will be taken off once the railway project comes to it. So I request through you, Chairperson Sir, to the Railway Minister to have a small diversion of 500 meters and have another line by saving the families and the agricultural land of that marginalized society of Mukunur and also of Reddy Ali, where इस मुद्दे को लेकर के आक्रोशित है और स्थिति वहां पे माननीय मंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूं कि किसानों के आक्रोश को देखते हुए भूमि अधिग्रहण कानून में उचित तब्दीलियां लाई जाए ताकि वहां के लोगों को अंबेडकर नगर के किसानों को सही रूप से मार्केट रेट पे पैसा दिया जा सके। इसी के साथ साथ मेरा आपसे निवेदन ये भी है कि औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिकल हब में जो नए उद्योग आएंगे उसमें अंबेडकर नगर के लोगों के लिए, अंबेडकर नगर के युवाओं के लिए 50% नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि उन लोगों, वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस अत्यंत ही इम्पोर्टेंट इशू पर केंद्रित करवाना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री अब्दुल खालेक जी। I would like to draw the kind attention of the House. Thank you so much, sir. Chairman, sir. I would like to draw the kind attention of the House towards a grave concern that has plagued the state of Assam for far too long, the relentless issue of flood and erosion. The state bears the burden of approximately 31.05 lakh hectares of flood-prone area as identified by Rashtriya Bar Ayog, constituting a staggering of 39.58% of the total land area of the state, whereas the rest of countries combined flood-prone area stand at about 10.2% only. The gravity of the situation cannot be overstated when it is seen that the flood-prone area of Assam is 4 times the national mark of the flood-prone area of the country. The Assam government projects an increase in extreme rainfall events by 35% and an increase in the rise of plus events by more than 25% due to climate change. Natural forces cannot be tamed, but communities can be equipped for preempt large-scale disasters. The government is majorly investing in rescue and relief measures during the flood. While these immediate and short-term actions are necessary, there has been no long-term measures in sight of mitigate the issue. Similarly, since 1950, over 4.27 lakh hectares, 7.40% of the Assam's total area, have eroded along the Brahmaputra and its tributaries, with an annual average loss of nearly 8,000 hectares. This has led to the disappearance of 2,500 villages, affecting lakhs of people who reside on embankments. Even with such severity of the situation in Assam, the absence of proper framework to officially declare flood and erosion as national calamities hinders in combating these recurring challenges effectively. Therefore, I urge Honorable Union Home Minister to immediately spearhead the development of necessary legislative measures that can enable the formal declaration of floods and erosion as national calamities. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 11, Shri Jasmeer Singh ji. धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आना चाहता हूं। ये मुद्दा है प्राइवेट बैंकों की तरफ से किसान की हो रही लूट का। सर, अगर कोई भी आदमी कार का लोन लेता है तो उसको 7.8% से 10% तक उससे ब्याज दिया जाता है। अगर कोई भी बिजनेस के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर कर्जा लेता है उसे 7.25% to 9% लोन दिया जाता है सर। जो
दूसरे हाउसिंग लोन है 8.5 से 9.5% उससे ब्याज दिया जाता है। सर, हैरानी वाली बात है कि अगर किसान अपनी लिमिट बनाता है खेती करने के लिए, उससे 15% ब्याज लिया जाता है। सर, इससे भी आगे अगर आप कोई नया ट्रैक्टर लेते हो, आप कंबाइन लेते हो, जहां कोई भी किसान फार्म इक्विपमेंट लेता है, तो आप हैरान रह जाएंगे 22% तक प्राइवेट बैंक जो उस पर ब्याज वसूलते हैं। सर कैसे किसान ये इतना ब्याज दे पाएगा? इसको रैशनलाइज करना चाहिए। ये केवल मेरा नहीं या अपोजिशन का नहीं, ये हमारा सभी का मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बैंकों को जो किसान के साथ ये लूट हो रही है, इससे रोका जाए। दूसरा सर, इसी के माध्यम से कि अगर आपने देखा जाए कॉरपोरेट के, हमने तकरीबन 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है लोन्स राइट ऑफ किए हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये किसानों का तो सिर्फ 5 लाख करोड़ है, इसको भी राइट ऑफ करके किसान जो अपने गले में फंदा डालता है उसके छुटकारा दिलाया जाए, इस जो कर्जा से किसान को मुक्त किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 12 श्रीमती अप्रूपा पोद्दार जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity, sir. Through you, I would like to draw the attention of this government that towards the vacancies position for the SC, STs and the other backward classes by the Union government. Through the data provided by the Ministry of Railways and Education, it is evident that we are far behind in fulfilling our commitment towards the inclusion and equality towards the society. In the Indian Railways alone, there exist 86,211 vacancies for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. It is disheartening that 18,600 of these vacancies have been carried over to this previous year. Even the parallel pattern is even witnessed in the central universities, where 46% of the reserved are of OBCs, 44% of ST and 37% for SCs in central universities still remain unoccupied. Even in our most prestigious institutions like IITs, 2,750 faculties of SC, ST, OBCs and EWS are remaining vacant. This highlights the magnitude of underrepresentation in our society. It is the constitutional duty of the government to ensure the livelihood and the social upliftment of these communities. In 2014, this government promised to create 25 crore more jobs. It is imperative that the government fulfill this commitment. I appeal to the government to address the vacancies reserved for SC, STs and OBCs with a sense of urgency and transparency in this recruitment process. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 13, Sri Antony ji. Thank you, Chairman. Chairman, I request the government to kindly enhance the upper limit of salary from rupees 21,000 to 40,000 for availing ESA benefits to all eligible workers in the private sector. An employee getting a monthly salary above 21,000 is out of the ESA coverage benefits. It should be noted that, having understood the growing cost of living in the country, the 6th Pay Commission under Congress-led UPA government recommended a salary hike for government jobs. After this, employees in the private sector also revised the salaries of their employees. As a result, a significant section of workers in the private sector receive monthly salaries beyond 21,000. Hence, these employees and their dependents get out of the purview of the ESA benefits. Therefore, I request the government to enhance the salary limit up to rupees 40,000 per month, so that several lakhs of beneficiaries will continue to get ESA benefits.
Thank you. Thank you very much. So we are associated with. Thank you. आप लिख कर दे दीजिए. Item number 14, Sri Kotagiri Sridhar ji. Thank you, sir. Speaker, sir. Exactly 10 years ago, in the 16th Lok Sabha, the great state of Andhra Pradesh was divided by making several promises under the AP Reorganization Act. One of the promises was for providing a South Coastal Railway Zone in Visakhapatnam. It was finally approved in this Lok Sabha, the 17th Lok Sabha, but in 2019, but it hasn't still come under reality. The DPR I hear is still under review. No fixed time frame was fixed to make this an operational railway zone. While special status is still pending, people of Andhra Pradesh are eagerly appealing for making other promises a reality. And I request government to make our dream for a South Coastal Railway Zone a reality, Speaker, sir. Also, on a side note, there is a new Vande Bharat Express from Hyderabad to Visakhapatnam. And my constituency is Eluru. It's a district headquarters with almost 2 lakh people and almost 1 million people around Eluru. But unfortunately, there is no stop in Eluru, which the next stop from Eluru is almost 200 kilometers in Rajahmundry. So I request Railway Minister and Railway Ministry to consider Eluru to have a stop for Vande Bharat Express between Hyderabad and Visakhapatnam. Resources should be exhausted in order to persuade the Qatar government in order to get rid of those ex-Navy personnel from the custody and from this kind of charges, because it is the concern of the nation, it is the concern of those families. So I would suggest the government that they should be proactive and they should strive hard to get rid of those hapless ex-Navy personnel of our country. Thank you. Sri Suresh Kodikunil ji. Sir, the famous and well-known agriculture scientist, Dr. M.S. Swaminathan, Padma Vibhushan Dr. M.S. Swaminathan, passed away 3 months back in Chennai. Sir, the country is very much aware that Dr. M.S. Swaminathan's contribution in our agriculture sector, as well as the self-sufficient of the food security. But at the same time, the NDA government chose to disrespect the legend when he passed away, as the government did not accord any rightful honor or paid tributes or marks of respect to Dr. M.S. Swaminathan and displayed their arrogant and ungrateful attitude towards the great scientist. The government also did not send a proper representative of the union government to be present throughout the funeral function in Chennai. So his family belongs to my constituency, Kuttanad, and also he has given so many contributions to the agriculture sector in Kerala also. Sir, I demand through you, sir, at least now the government must take steps in granting the rightful honors to Dr. M.S. Swaminathan by awarding the citation of Bharat Ratna posthumous, and further Dr. M.S. Swaminathan's life-size statue be erected in the new Parliament building along with a portrait installed in the central hall of the Parliament. And also, I suggested to be named Indian Council of Agriculture Research, ICAR, to be immediately renamed Dr. M.S. Swaminathan Institute of Agriculture Research. The government must rectify its mistake and honor Dr. M.S. Swaminathan for his extraordinary contribution to Indian agriculture and the nation's food security
which is considered as the pillar of national security. With these words, I would like to urgently invite Honorable Government through you, sir, Dr. M.S. Swaminathan. The country cannot ignore him. So, Honorable Ministers are here, Cabinet Ministers are here. Honorable Cabinet Ministers are here. Smriti Irani, Dharmendra Pradhan is here, and Anurag Singh Thakur is here. So, you are ignoring. Kindly, Sir, kindly. My name being called out without substance and without information by the honourable member. Secondly, sir, I am sure that once the member lays the issue at hand on the floor, the appropriate minister will respond. But I would request through you, sir, that the honourable member not be in a spiteful position just because his party had to face a humiliating defeat just yesterday after the election results were announced. What is the connection with sir? हेलो वैज्ञानिकों के हम पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। Government spokesman Anurag Singh Thakur is here. He can 16 श्री ज्योतिर्मय सिंह महातो ज्योतिर्मय आइटम नंबर 17 श्री बसंत कुमार पंडा उनका माइक करो। सर मैं इधर रेस करना चाहूंगी जो 2019 में 550 साल गुरु नानक देव जी के गुरपुरब पे इस सरकार की तरफ से पंडा जी बोल रहे हैं, बसंत कुमार पंडा। मैडम आपका नहीं है बसंत कुमार। आप माइक की ओर आइए, माइक की ओर आइए। हाँ ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों को कौशल बढ़ाने के लिए, उससे विश्व स्तर पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सरकार को और भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और देशों में कलाकार प्रतियोगिता, कलाकार कला संगमों के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। मैं आपका ध्यान उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र के और आकर्षित करना चाहता हूं, जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्मारक स्थित होने के साथ ही पश्चिम उड़ीसा में भवानीपटना पश्चिम उड़ीसा का केंद्र बिंदु है। कालाहांडी, कोरापुट और नुआपड़ा के कई स्थानों को भारत का दूसरा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जहां विशाल घाटी, पहाड़, बड़े पानी के झरने, डैम, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से भरपूर अद्भुत नजारा स्थित है। और ये क्षेत्र आदिवासी कला, गीत, संगीत, नृत्य और उड़ीसा के विभिन्न प्रकार बाजा और का उद्गम स्थल है, जहां हमारे पश्चिम क्षेत्र के प्रतिभापूर्ण कलाकार अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं, जिससे वो वंचित हैं। पश्चिम उड़ीसा में फिल्म, जहां हमारे पश्चिम क्षेत्र के पश्चिम उड़ीसा में फिल्म स्टूडियो न होने के कारण यहां के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम उड़ीसा हमेशा से उपेक्षा का कारण बना हुआ है और राज्य सरकार स्टेप मदर एटीट्यूड हमारे क्षेत्र के प्रति दिखाते आ रहे हैं। उड़ीसा में सिर्फ एक कलिंगा स्टूडियो जो कि कटक में स्थित है। मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मामलों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को निर्देशित कर
पश्चिम उड़ीसा में भवानीपटना के पास अकादमिक फिल्म प्रशिक्षण स्कूल और साथ में राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके भूमि आवंटन हेतु आग्रह किया जाए, ताकि जहां जल्द से जल्द एक फिल्म स्टूडियो की शुरुआत हो सके और हमारे आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिले। पश्चिम उड़ीसा की बड़ी आबादी आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ से आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर भाग लेने और पश्चिम क्षेत्र के कलाकारों को विश्व स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करके मान सम्मान बढ़ाने के लिए क्षेत्र का बढ़ चढ़कर भाग लेने का मौका मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कदम उठाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आइटम नंबर 18 श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद उपसभापति जी महोदय, मैं सदन के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अखनूर, खोड़ और जोड़ियां की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पर बहुत बड़ा एक दरियाए चिनाब है और दरियाए चिनाब में जब भी बाढ़ आती है तो सारे क्षेत्र की जो कृषि योग्य भूमि है वो बह जाती है और दरियाए बहा कर ले जाता है। लेकिन अब हद तो अब इतनी हो गई है कि जब भी बाढ़ आती है, जब बर्फ पिघलने से जो पानी दरिया का बढ़ता है, अब वो गांव में घुसना शुरू कर गया है। और महोदय, ये जो कृषि योग्य भूमि है ये तो बह गई है, अब गांव जो है वो बहने की कगार पर जो आ गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गांव अब चिनाब दरिया की लपेट में आ रहे हैं, अगर हमने कोई ठोस कदम उन गांव को बचाने के लिए नहीं किए तो वो गांव के गांव जो है वो बह जाएंगे और लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अखनूर, गुर्गी टक्की, संग्रामपुर, मक्याला, चंजवा, देवीपुर, चक सिकंदर, गैर और बकोर और इसके अलावा भी कुछ छोटे गांव भी हैं जो दरिया चिनाब की लपेट में आ गए हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि देखिए, ये पहले बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना था, लेकिन अब 55 करोड़ की लागत से वहां पर एक बांध बांधने की योजना बनी है, ताकि बांध बांधने से उन गांव को जो है वो बचाया जाए। ये जो 55 करोड़ का प्रोजेक्ट है बनकर जल संसाधन मंत्रालय में आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल संसाधन मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे और ये 55 करोड़ की जो राशि है ये रिलीज करे, ताकि वहां पर एक बांध बनाया जाए और बांध की वजह से ये जो गांव हैं इनको बचाया जाए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है अपने सारे उस क्षेत्र के लिए। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, सदन से भी प्रार्थना करता हूं और जल संसाधन मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूं कि जो अखनूर के साथ साथ लगने वाले जितने भी गांव हैं इन्हें बचाने का प्रयास किया जाए और ये 55 करोड़ की राशि जो है वो इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया जाए, ताकि वहां पर एक अच्छा बांध बने और इन गांव को बचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 19 महेश साहू जी। काइंडली माइक ऑन। अधिष्ठाता महोदय, ए प्रसंग को आपण पाखरे उपस्थापन करने पूर्व मु आपण को सादर निमंत्रण करुच्ची ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र 3टी जातीय राजपथ 49 पालड़ा ठारू केउंझर एवं 55 कटक ठारू संबलपुर तत्सहित पितिरी ठारू डुबुरी
जो जातीय राजपथर अवस्था एभली एक संकटापन्न अवस्थार अच्छी केन्द्रर विकास कार्यक्रम ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र 1,00,000 कोटी टंका वर्ष को देउथला बेले विकास परिवर्ते से क्षेत्र में आज पर्यंत 326 जन विनाश होती विभिन्न दुर्घटना मृत्यु घटी ए क्षेत्र में मु आपण को निवेदन करने चाहे केंद्र सरकार पितरी ठारू डुबरी रास्ता को लोकार्पण करथिले किंतु सेठारे ब्राह्मणी रामियाल एवं डमसोला ठारे पोल निर्माण होगा संभव है नहीं संपूर्ण है नहीं पितरी ठारे मध्य ओवरब्रिज एवं अंडरपास निर्माण शेष है नहीं अथच केंद्र सरकार विभिन्न दृष्टिकोण पितरी ठारू डुबुरी रास्ता को गृह मंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री द्वारा लोकार्पण हैला परे भी मध्य से कार्यक्रम एते धीर गति चली संपूर्ण है नहीं पालड़ा ठारू केउंझर एवं आपनकर पितरी ठारू डुबुरी कटक ठारू संबलपुर बारंबार रोड सेफ्टी मीटिंग रे आलोचना पर्यालोचना हला परे माननीय मंत्री सहित आलोचना परे एवं 2024 मार्च सुधा शेष हो बोली घोषणा थिला परे मध्य मु निवेदन करने चाहे केंद्र सरकार को निजे स्वचक्षुरे देखंतु 2024 मार्च सुधा शेष होगा आदौ संभव नुहे 2025 मार्च जगह चलो एक कथा केंद्र सरकार विकास ये गोटे ज्वलंत प्रमाण 3टी जातीय राजपथ पर आशा करी अधिष्ठाता महोदय आपन को निवेदन करने चाहे केंद्र सरकार जो हिसाब से ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र राजस्व पाँच तार सामान्यतम अनुदान रे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र अधिक उन्नति हो पारिथा किंतु केंद्र सरकार ए बाबद कौन प्रकार नजर दौना मु आशा करी आपण जरिया केंद्र शिक्षा मंत्री पाखे बसी शुणुंट से अनुभव करने दरकार केंद्र प्रति राज्यर जो दायित्व एवं लोकसभा क्षेत्र जो सैक्रिफाइस से कथा को गुरुत्व प्रदान करी कार्यक्रम को आगक नापी आपण जरिया केंद्र सरकार को अनुरोध करने सहित चेतावनी देउछि। थैंक यू वेरी मच श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी। श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I want to raise one important issue related to my state. Sir, Manrega, Awas Yojana, health issues, National Health Mission, all money allotted by Government of India have been kept blocked since last 2 years, amounting up to rupees 18,000 crores. We few MPs and our ministers came to Delhi to meet Honorable Minister, not the Cabinet Minister, sir. It is Minister of State. Surprisingly, we were kept waiting for 2 hours in the waiting hall, were offered tea, and ultimately after 2.5 hours, when we went for the meeting, then she left behind the door. We were lifted bodily. आपका इश्यू की बात करो। मेरा इश्यू ये है, we were lifted by bodily. Senior MPs, 10 ministers, and were taken 20 kilometers away from Delhi. We demand, sir, that Manrega allotment, Awas Yojana allotment should be sent to state government without further delay. We are keen to place our demand to Prime Minister of India, including Chief Minister, and we hope this issue to be discussed on the floor of the House without further delay, and economic blockade should not be allowed to be created in the state of West Bengal. माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी। सभापति महोदय, दादा नहीं चिद भी मेरी पट भी मत करो भाई। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन की वरिष्ठ सदस्य सुदीप जी ने कुछ विषय उठाया भारत सरकार के बारे में, मनरेगा के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। उनको भारत सरकार ने ब्लॉकेड किया है। अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य सही नहीं है। ये भारत सरकार की ओर से बंगाल की गरीबों की पैसा ले जाते हैं और उसको तोलाबाजी करते हैं, कटमनी रखते हैं। यही मूल कारण है। देश की सभी राज्य वित्तीय श्रृंखला में रहते हैं। बंगाल उसके ऊपर खुद को मानता है, बंगाल की सरकार खुद को उसके ऊपर मानता है। सर, मैं ऑन रिकॉर्ड
on the floor of House, I would like to remind and like to mention, in the PM Postal Yojana, in the midday meal scheme, they have misappropriated 4,000 crore. 4,000 crore. Government of India has given inquiry to CBI. Everything will come out on the front. Everything will come out to the table. इनकी दिक्कत है, ये गरीबों की पैसा लूट करते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्चा करते हैं. इनके ऊपर इंक्वायरी होगा. ये सब इनके आधे डजन मंत्री जेल में है. सभापति महोदय, इनकी शिक्षा मंत्री जेल में है. इनके आधे डजन मंत्री जेल में है. इनको डर लगने लगा है, इनकी लीडरशिप जेल में जाएगा. इसी डर से ये सदन के समय को खराब करते हैं. श्री हसनैन मसूदी जी, श्री हसनैन मस्कली बैठ जाइए. जनाब मसूदी जी बोलेंगे, वो रिकॉर्ड में जाएगा. जनाब, जम्मू कश्मीर को कई एक संगीन मसाइल का सामना है. सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ कोई लोकशाही नहीं है. अफसरशाही से हम जूझ रहे हैं पिछले 6 साल से. आज जबकि जश्न मनाया जा रहा है 5 रियासतों में इंतखाबात के नतीजे का, जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हमें इंतजार है इंतखाबात का. अब वो संगीन मसला है, लेकिन सबसे बड़ा संगीन मसला जो आज है वो बिजली का बहरान है. जनाब, 3215 मेगावाट हम बिजली पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन आजकल 16 घंटे का वहाँ पर शटडाउन रहता है. ठिठुरती सर्दी में, सब जीरो टेम्परेचर में. सर, मेरा मुतालबा होगा पहले ये रैशनलाइज किया जाए, जो बिजली की कटौती है वो रैशनलाइज की जाए. दूसरी बात ये, हमारे जो NHPC के साथ पास हमारे जो पावर जनरेशन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो यूनिट्स है वो वापस दे जाए, क्योंकि बहुत सारा पैसा NHPC ने उससे हासिल किया. सलाल वाला एग्रीमेंट था 25 साल तक रहेगा, लेकिन आज वो 50 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. तो तब तक बिजली का मसला हल नहीं होगा जब तक कि आप हमारे NHPC के जो हमने दिए थे वो उड़ी 1 हो, उड़ी 2 हो, बागलियार हो या सलाल हो, जो भी वहाँ पर वो वापस दीजिए. दूसरी बात ये है कि आज भी स्मार्ट मीटर के नाम पर जो हमारे ST हैं, BPL हैं और जो आखिरी पायदान पर हैं, उनसे बिजली फीस 100,000 से ज़्यादा लिया जा रहा है, जबकि पास की रियासतों में जीरो बिजली बिल आता है. पंजाब में, दिल्ली में आपके जो शासन है, उत्तराखंड में, और आपने जो वादे किए राजस्थान में, MP में बिजली कम कीमत पर देने का या जीरो बिल देने का, जम्मू कश्मीर के साथ एक अलग ही व्यवहार किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है ही नहीं. ऐसा व्यवहार किया जाता है. पास की रियासत पंजाब में आधी आबादी को जीरो बिल आता है और हमारे ST को, BPL को, SC को और जो आखिरी पायदान पर है उनसे इतना बिजली बिल देता है. तो मेरा ये मुतालबा होगा कि NHPC के पास जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस दिए जाए. पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी ले रही है NHPC. और दूसरी बात है, वहाँ पर रैशनलाइज किया जाए जो भी शटडाउन है, ताकि लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना हो. थैंक यू. श्री जगदम्बिका पाल जी. Report of the Committee of Privileges, Sri Ilamaram Karim. Honorable Chairman, sir, I rise to present the 75th report in English and Hindi of the Committee of Privileges on questions of alleged intentional and deliberate act of presenting misleading facts to the media, misrepresentation of the proceedings of the Council, and affront to the authority of Chair, and for including the names of members in the proposed Select Committee without their consent in violation of rules by a member. Thank you. Honorable members, the committee, after deep and thoughtful consideration, finds Sri Raghav Chadha, Honorable Member, guilty for both the charges. Charge 1, that he intentionally and deliberately presented misleading facts to the media, misinterpreted proceedings of the Council, resulting in affront to the authority of the Chairman Rajya Sabha, and engaged in outrageous defiance of the resolutions of the House and directives of the
Honorable Chairman Rajya Sabha, and charge 2 for including the names of members in proposed select committee without their consent in blatant transgression of Rule 72 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. As regards the sentence, the committee finds the suspension suffered by him since 11th August 2023 from the House thus far as sufficient sentence that will meet the ends of justice. The committee stands committed to upholding the sanctity of parliamentary proceedings and safeguarding the integrity of the institution. The committee expresses hope that Sri Raghav Chadha, member, will reflect and introspect. The committee expects Sri Raghav Chadha to uphold the expected standards of conduct and decorum befitting a member of parliament. Honorable members, Sri GVL Narasimha Rao, honorable member, to move a motion in the matter. Sir, the mic is not on, sir. Can I go ahead, sir? Okay. Sir, I move the following motion under proviso to Rule 256(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, that this House resolves that Sri Raghav Chadha, member, be held guilty of breach of privileges and the suspension suffered by him so far be taken as sufficient punishment, and the House may consider discontinuance of suspension of Sri Raghav Chadha, member, from the service of the Council from this day. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Raghav Chadha may attend the proceedings of the House. The Post Office Bill 2023, Shri Ashwini Vaishnav, to move a motion for consideration of the Post Office Bill 2023. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. माननीय मंत्री जी, आप बोलना चाहेंगे? Honorable Chairman, sir, 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लेके आया गया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जैसा हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, डाक और डाकघर और डाकिया ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे देश भर में जन जन में बहुत ही एक बड़ा विश्वास है। 125 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि ये इररिलेवेंट हो जाएगा, विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में। माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में डाक और डाकघर और डाकिये को इसको मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के एक इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया गया है। पोस्ट ऑफिस को प्रैक्टिकली एक बैंक में कन्वर्ट किया गया है। डाकघरों का विस्तार 2004 से 14 में जहां 660 डाकघर बंद किए गए थे, आज आपको जानकर खुशी होगी माननीय सभापति महोदय, सदन को जानकर खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच में करीब 5000 डाकघर नए खोले गए और करीब 5746 और नए खोलने की प्रक्रिया में। 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग
और डिजिटल बैंकिंग के जरिए से कनेक्ट किया गया है। जैसा मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्जन का विजन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के तहत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र 434, जिसमें अब तक करीब 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी है। डाकघर आधार सेवा केंद्र 13,500 खुले जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते, जो बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल बनता है, उसमें 1,41,000 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि बैंक को पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के, बहनों के 3.5 करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं। सभापति महोदय, आपको एक और बहुत जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है जिसके जरिए से एक रिमोट एरिया से भी, साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है। और इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कर्नाटक के बेलगांव से एक बहन सृष्टि करंजनी घर में बने वाटर कलर एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर से भाई श्री आदिल अहमद खान गलीचे रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आसाम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं। और कोट्टयम केरला से मैथ्यू जोसेफ नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरह के ऐसी सुविधाएं डाकघर के जरिए से मिल रही है आज, उसका ग्लोबल रिकग्निशन भी है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीयू, उसने अभी रिसेंटली स्पेशल जूरी अवार्ड दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव टेंडर, इंक्लूसिव ट्रेड इंक्लूजन के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीओ से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक 3 डायमेंशनल प्रिंटेड डाकघर बना बेंगलुरु में, और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून की एवज में जो नया कानून लाया गया है, अति सरल भाषा में बना है। छोटा सा कानून है, 17 क्लॉजेस का, और सारा का सारा फोकस है मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज पे शिफ्ट होने का। धन्यवाद। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is on the 4th December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023, 6 hours. Consideration and passing of the following bills as reported by a standing committee after they are passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, 12 hours to be discussed together. Consideration and passing of the Central University Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha: first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24, and second, demands for excess grants 2020-21, 6 hours to be discussed together. Now, list of speakers.
माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जान सकता हूँ कितना वक्त है मेरे पास? 15 मिनट है माननीय जी। 15 मिनट जी, थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल जब लाया गया है और मूवर ऑफ द बिल मंत्री जी ने कुछ इतिहास, कुछ ऐसी बातें रखी है यहाँ पे, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट परिकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था जब मैसेज देने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, किसी आवाज़ के ज़रिए, किसी झंडे के ज़रिए, पंछियों के ज़रिए, और धीरे 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 उसमें सुधार आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एक रूप में परोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने एक किया वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। तो इसको लेके डाक सेवाएं शुरू की गई। रैन हेस्टिंग्स वो आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेल के नाम से इसको एक रूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डेलहाउसी ने 1854 में इंट्रोड्यूस करके एक सिस्टेमेटिक वे में हमारी डाक सेवाओं को बनाया। आज़ादी के बाद हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने ये सोचा, इफ यू वांट टू स्पीक आई कैन गिव फॉर 5 मिनट। अगर उस वक्त पे हमारे उन नेताओं ने ये सोचा कि कुछ आवाम की चिंता करते हुए पब्लिक अंडरटेकिंग्स होने चाहिए, पीएसयूज होने चाहिए, और पीएसयू प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। मुनाफा कमाना पीएसयू का सिर्फ काम नहीं है। पीएसयू का काम होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड बन के काम करने का। कि अगर किसी एक गांव में, छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचाना है तो वहां पहुंचनी चाहिए। वो सोच थी और उसी सोच के चलते आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया साहब कि उपसभापति महोदय, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पे है तो वो हमारे देश में है। कुछ लोग फर्जी डिग्री वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया। मैं कहता हूं देश ने ये करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, सबसे अच्छी डाक सेवा वो हमारे देश में बनी। वो विजन था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करोगे। कुरियर वाला टाई पहन के आपको कुरियर दे जाएगा, पर दिल्ली में दे जाएगा, बंबई में दे जाएगा, अहमदाबाद में दे जाएगा। क्या वो कच्छ के अबड़ासा के एक छोटे गांव में वो कुरियर वाला डाक देने जाएगा? वो नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए उपसभापति महोदय, सरकार को के मंशा से हमें निकल जाना होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर ये काम करेंगे, पीएसयू की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे विश्वास है। आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया।
डाकिए की डाक पे आज गांव के गरीब का भरोसा है। आप उसको मारने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधान के ऊपर जाने से पहले एक दो बात रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार पीएसयू के जरिए मिलने वाली सर्विस पे कैची क्यों चलाती है वो मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक हुआ करता था यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और यूपीसी का आधार अदालतें भी मानती थी कि ये यूपीसी से गई हुई डाक है, मीन्स इट इज सर्टिफाइड, सामने वाले को मिली है। और रजिस्टर्ड पोस्ट वाज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू रजिस्टर्ड पोस्ट। यूपीसी वाज with very less money one was able to do यूपीसी। अब आपने क्या कर दिया, यूपीसी खत्म कर दिया। आज अगर जाओ पोस्ट ऑफिस में और कहो कि मुझे एक खत यूपीसी के जरिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो कहेंगे कि नो मोर यूपीसी सर्विसेज इज अवेलेबल इन पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या हम ये करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। अपनी मंशा लोगों की सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी को, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे उसकी चिंता हमें करनी होगी। तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP, also known as the Indian Post, has been backbone of the country's communication and has played a crucial role in country's social and economic development. बहुत क्रूशियल रोल इसने किया है। आप इसको कोरोना काल आया, समझ सकता हूं, सभी को लॉसेस हुआ, और इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कहीं हुई होगी तो वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर हुई होगी। आप दीजिए उनको सब्सिडी, आप दीजिए उनको पैसा, आप इनको मजबूत बनाइए। मैं आपके जरिए मंत्री जी को कहना चाहता हूं, पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा स्पोर्ट्स का कोटा रहता है। इस देश के नाम रोशन करने वाले हमारे रमतवीरों को इस डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलती थी। मुझे खुशी होगी मंत्री जी जवाब देंगे कि कितने वक्त से आपने वो स्पोर्ट्स कोटा के उन हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को जॉब में नहीं लिया है, और क्यों नहीं लिया है। और आप जब लेते हो किसी को तो थोड़ी निगाह उधर भी रखिए कि अगर आपने एक नेशनल प्लेयर जो टेबल टेनिस की है और उसको नौकरी दी है, और अगर उसकी पोस्टिंग आपने ऐसी जगह की है कि जहां पे टेबल टेनिस के बच्चों को वो प्रशिक्षित नहीं कर सकती या खुद की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, तो उसका क्या फायदा होगा। आप रखिए उसको उस जगह पे जहां टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड बच्चे हो। उस तरह से इस डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। मैं इंडिविजुअल केसेस यहां डिस्कस नहीं करता हूं, पर मंत्री जी कहेंगे मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको जरूर दूंगा। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो नया कानून लेके आए हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स wherever the central government established posts, it will have an exclusive privilege conveying letters by post as well as incidental services such as receiving, collecting, sending, delivering letters. The bill does not certain such privileges. The bill also states that the post office will have the exclusive privilege of issuing postage stamps. मैं एक और प्रावधान पे माननीय उपसभापति महोदय आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो आप प्रावधान कर रहे हो उसमें प्रावधान है इस नए कानून की वजह से, द एक्ट स्पेसिफाइज
The services provided by the post offices include the delivery of postal articles, including letters, postcards, parcels, money orders. The bill provides that the post office will provide services prescribed by the central government. आप क्यों नहीं क्लैरिटी करते हो कि आप ये इनसे करवाना चाहते हो? कानून बनाना संसद का अधिकार है। उस अधिकार के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसा ग्रे एरिया ना रखे कि कानून बन गया है तो बाद में मुझे जो ठीक लगेगा वो सर्विसेज लूंगा मैं इनसे। कल कोई पॉलिटिकल पार्टी है वहां से सोचेगी कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी के ये पैम्फलेट्स भी इनसे बंटवाना है और इसके लिए मुझे ये रूट करना पड़ेगा, तो मैं रूट करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो, come with a clear hand, come with a clear proposal. We are here to discuss and then we'll either pass or reject the bill, but we'll have an opportunity to express ourselves. आप इसका ग्रे एरिया, एक बार बार ऐसे बिल्स आते हैं मैं देखता हूं, हम पास तो करते हैं पर उसमें क्लैरिटी नहीं होती और बाद में नोटिफिकेशन के जरिए, बाद में कुछ अमेंडमेंट के जरिए सरकार उसको अमेंड करती रहती है। नाउ द अनदर प्रोविजन बाय दिस बिल इज पावर टू इंटरसेप्ट शिपमेंट्स। साहब, प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। मैं जानता हूं सिक्योरिटी जरूरी है, मैं समझ सकता हूं लोगों की सुरक्षा के लिए आप करो, बट ऑन नेम ऑफ सिक्योरिटी, अभी अभी हमने देखा कि वर्ल्ड में जिस एक कंपनी का नाम है कि जिसका सॉफ्टवेयर कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, हमारे जैसे मुझे भी मिला एमपीज को कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स आर ट्राइंग टू हैक योर मोबाइल। किस दिशा में हम जा रहे हैं? और अगर आप राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करवाते हो ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, मैं मानता हूं इस बिल के इस प्रावधान को। और आप पावर्स कैसे देते हो? सर, आई विल टेक यू टू दोज प्रोविजंस, आई विल रीड व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस बिल। Powers to intercept shipments. The act allows the interception of a shipment being transmitted through the post on certain grounds. Now just look at what are the grounds. An interception may be carried out on the occurrence of any public emergency. Is there any clarity? What is public emergency? When you have objects and reasons, I fail to understand why government in objects and reasons not clarifying what is the public emergency. Thereafter, or in the interest of public safety or tranquility, एक वाइड रेंज आपने दे दी। उसके बाद आगे आप कहते हो such interception may be carried out by the central government, state governments or any officer specially authorized by them. Why don't you clarify? किस लेवल के ऑफिसर को आप स्पेसिफाई करोगे? क्या एक छोटे लेवल के अधिकारी को आप करना चाहते हो या किसी जिम्मेवार आदमी को करना चाहते हो? I'll An interception of shipment can be detained or disposed of by the officer in charge. The officer also have a powers to open, detain or destroy the shipment. डाकिया के ऊपर का भरोसा आपके ऐसे प्रावधान से चला जाएगा। आज एक 50 पैसे का पोस्टकार्ड के ऊपर भी लोगों को भरोसा होता है कि मैंने लिखा तो ये पहुंचेगा। आप ये प्रावधान करके आप क्या करने जा रहे हैं? हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, और हम विश्व गुरु जहर की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस बात को गौर से देखें और मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे प्रावधानों में आप क्लैरिटी लेके आइए
कि किसको आप कब, कौन, कहां और कैसे करेगा। मैंने पहले ही कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। मैं आखिर में एक छोटी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आप जब छोटी जगह पे नौकरियां देते हैं, लास्ट एक ही मिनट में करता हूं, तो वहां पे अगर आप पोस्टमैन को, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में गांव में किसी को नौकरी देते हो तो वहां के लोकल यूथ को आप प्राधान्य दें। उसी गांव का डोमिसाइल है, वहीं का रहने वाला है, उसको आप अग्रिमता दें। शहर से नौकरी ले लेता है, फिर कोशिश करता है ट्रांसफ़र और करवाने की, वो गांव में टिकता नहीं और छोटा गांव परेशान होता है। तो उसी गांव का या विद इन 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स नहीं मिलता है तो स्टेज बताइए आप और वहीं के लोकल को रखिए, तो जहां पे रहेगा वो वही काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मेरी बात मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, 12 मिनट आपके पास। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि पोस्टल बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सरकार ने जो पोस्टल बिल 2023 लाई है, ये गरीबों के लिए और सेवा सुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर लाई है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज जनता के प्रति समर्पित सेवाएं हों, इस दृष्टि से ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये विषय भी इसे पोस्टल बिल का केंद्र में है। महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों, जिसमें सभी जाति वर्गों के लोग आते हैं, इस व्यावसायिक वर्ग में, उन सबको ये पोस्टल बिल लाभकारी होगा, लाभ देगा, ऐसा मेरा मत है। अभी मैं इसमें कह रहा हूं, पोस्ट ऑफिस बंद किए गए थे। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 5000 से ऊपर पोस्ट ऑफिस खोले हैं। यही था कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को गांव, गरीब और किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार समर्पित है। अब 5000 कुछ और खुलने जा रहे हैं, तो कहां 700 बंद करने वाली सरकार और कहां 10,000 बैंक को, पोस्ट ऑफिस को खोलने वाली सरकार। रोजगार का सवाल बताया गया है। ये अगर नए डाकखाने खुलने हैं तो किसी बिना मैन पावर के तो नहीं खुलेंगे। 1 लाख लोगों को नौकरी 5000 डाकखाने खोलने पर मिली है, तो जब ये 5700 डाकखाने खुलेंगे तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक होगा। ये तथ्य भी समझ में हमको आना चाहिए। डाक निर्यात केंद्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। व्यक्ति अपने निर्यात करने वाली सामग्री को लेकर डाकखाने में जाता है, डाकखाना उसको उसके लिए बॉक्स प्रोवाइड करता है, बॉक्स में उसका सामान रखकर टेपिंग करता है, पता लगाता है और उसके निर्यात वाले सामान को उस स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी कल्पना भी कभी हिंदुस्तान में नहीं थी कि डाकखाना भी निर्यात केंद्र के रूप में काम करेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र ठीक है कि 7-8 साल पहले हुए थे, लेकिन आज 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट की सुविधा, क्योंकि डाकखाना हर जिले में है। पहले पासपोर्ट सेंटर के लिए हमको जाना पड़ता था, मेरठ के लोगों को गाजियाबाद जाना पड़ता था और अदर जिलों में जाना पड़ता था। आज मेरठ के पोस्ट ऑफिस में सुविधा मिली है, तो उस सुविधा को और मजबूत करके 1.5 करोड़ लोगों का पोस्टपार्ट जारी करने का काम किया गया। टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग की दिशा में ले जाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। डिजिटल पेमेंट योजना, ये भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसी सरकार के द्वारा चालू की गई है। श्रमिकों के बारे में जिसकी चिंता बहुत कम लोग किया करते थे, उन श्रमिकों का भी बीमा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है और लगभग 1.5 लाख श्रमिकों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा चुका है और अब इसके सफल होने के बाद इसका विस्तार करने का संकल्प भी सरकार का है। मैं कुछ बातें और कह, उस बिल को सहमति नहीं दिला पाई थी सरकार और वो बिल वापस हो गया, ना उन्होंने संसद को वापस किया गया। उसके बाद जब अगले महामहिम राष्ट्रपति जी आए तो जनवरी 90 में उन्होंने पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया और 2002 में वो बिल वापस हो गया। वर्ष 2002 में भी इस प्रकार का एक प्रयास हुआ पोस्ट ऑफिस के सेवाओं में सुधार के लिए बिल कानून लाकर, लेकिन वो भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये बिल भी लैप्स हो गया। 2006-2011 में 2 ड्राफ्ट बिल जारी किए गए
सदन के विचार के लिए, लेकिन वो ड्राफ्ट बिल भी स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच गए और उसके बाद सदन में उसका मतलब वो बिल का रूप में परिणित नहीं हुए मान्यवर। ये बिल 2023 सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा लाई है और पास भी होगा। पास होगा तो पिछले इतिहास को अगर हम देखते हुए कहें तो इस सरकार की संकल्प शक्ति मजबूत संकल्प शक्ति है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस बिल को जब पास कराएगी तो ये पोस्ट ऑफिस सेवाएं आम जन का भाग बनेंगी, ऐसा मुझको कहना है। सारी चीजें सरकार पर निर्भर नहीं होंगी। इस बिल के बाद महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा और उसको प्रभावी बनाया जाएगा और महानिदेशक के जो निर्णय होंगे उस निर्णय को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। डाक सेवा के महानिदेशक जब भारतीय डाक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा तो सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति के मामले में नियम बनाने की शक्ति भी उसमें निहित होगी। महानिदेशक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि का नियम बना सकेंगे। डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के भी नियम बने जाएंगे। मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्जेज और दरें तय की जा सकेंगी। डाक घर को डाक टिकट जारी करने का भी अधिकार हो जाएगा। आधुनिकीकरण को बढ़ावा होगा और ड्रोन के जरिए पार्सल और लेटर भी पहुंचाए जाएंगे। हमने अपने बचपन में सुना था कि कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाया करती थी किसी युग में। आज ड्रोन के जरिए पत्र भेजने का संकल्प इस बिल के माध्यम से सरकार का है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था वर्तमान आतंकवाद के युग में और निजता, इसके बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित तरीके से हो, ये मेरा इस संबंध में निवेदन है। लेकिन सरकार इस बात की सावधानी रखेगी, इसका मुझे विश्वास भी है। केंद्र सरकार वस्तुओं को पते पर पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। आइटम एड्रेसिंग मानकों, पते की पहचान और पोस्टल कोड के उपयोग के माध्यम से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा, जबकि डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है। ये छटाई की गई प्रक्रिया को सरल बनाएगा और मेल और पार्सल डिलीवरी की सटीकता भी बढ़ाएगा और उसमें शीघ्रता भी लाएगा। सबसे बड़ी बात इस बिल की ये है कि ये नागरिक केंद्रित सेवाओं को विकसित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए विधेयक लाया है। मोबाइल और फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में ये विधेयक और भी अधिक प्रासंगिक रूप में है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी जहां योगदान देगा। भूस्थानिक कोड का कार्यान्वयन सफल होने पर सरकार ड्रोन के माध्यम से पार्सल को कुरियर करने की क्षमता में होगी। भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में नियमों के निर्धारित किसी भी दायित्व के अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं लेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुलनात्मक अध्ययन पिछले अधिनियम में और वर्तमान अधिनियम में। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में 77 धाराएं थीं। डाकघर विधेयक 2023 में केवल 16 धाराएं। पत्र डाक पर एकाधिकार था पिछले अधिनियम में, डाकघर विधेयक 2023 में अब एकाधिकार नहीं। दंडात्मक प्रावधान की 23 धाराएं थी पिछले एक्ट में, इस एक्ट में कोई दंडात्मक धारा की व्यवस्था नहीं है। फोकस है पहले था मुख्यतः मेल पर, डाक पर, अब डाक द्वारा जनता के उपयोग की सुविधाएं उसके मोहल्ले में और उसके गांव में देने पर केंद्रित है नया विधेयक 2023। रिजर्व एरिया में पहले पत्र रहते थे, अब डाक टिकट, डाक लेखन सामग्री भी उपलब्ध होगी। भाषा पहले जटिल थी, अब इस विधेयक को सरल करने का काम किया गया। दायरा पहले सरकार केंद्रित था डाकखाना, अब नागरिक केंद्रित है डाकखाना। ये इस विधेयक 2000 पोस्टल बिल 2023 के माध्यम से जनता को उपहार के रूप में मिलेगा। डाक शुल्क सीमित, डाकघरों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को देय राशि को कवर करने का काम करेगा। और वो जो बात मैंने पहले कही थी कि पता सूचकों और पोस्ट कोडों का प्रावधान होगा। पहले दरों को तय करने की शक्ति शासन में थी, अब महानिदेशक में होगी।
कुल मिलाकर इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने पोस्टल सेवाओं को जन उन्मुखी बनाने में जो प्रयास प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर पिछली सरकारों के जिनके बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाकर या लैप्स होकर चले गए, सरकारों को कोई चिंता डाक सेवाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की नहीं थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार में और आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार का विधेयक लाए हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं, साधुवाद भी देना चाहता हूं। और इस बिल के माध्यम से डाक सेवाएं जनता के दरवाजे पहुंचेंगी, जन उपयोगी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नाउ ऑनरेबल श्री सुखेंदु शेखर राय जी। थैंक यू सर। आज मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच का माहौल ऐसा है, शायद उनका मन में ये पुराने गीत गुनगुना रहे हैं कि कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल के ए धड़कन ठहर जा, मिल गया मंजिल मुझे। मैं बधाई देता हूं उन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को भी, जो भी सफलता जिनको मिला है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। और आज के दिन एक ऐसा बिल लाया गया जिसके लिए मेरे मन में बहुत अफसोस है। मैं वो अफसोस जताना चाहता हूँ। पहले तो एक बात है कि मैं सिर्फ 2 क्लॉज का रेफर करूँगा। क्लॉज 9 सब क्लॉज 1, शक्ति सिंह जी बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट may empower any officer to cause any item in course of transmission by the post office to be intercepted, opened, or detained in the interest of the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency, or public safety, or upon the occurrence of any contravention of any of the provision of this Act or any other law for the time being in force. Now, before I come back to this, if we look at clause 16, subclause 1, it says, the Indian Post Office Act 1898 is hereby repealed. तो रिपील हो गया वो पुराने एक्ट, लेकिन फिर क्लॉज 16 का सब क्लॉज 2 में बताया जा रहा है, notwithstanding the repeal of the Act, all rules, notifications, and orders made or purported to have been made under the Indian Post Office Act 1898 shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this Act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made under this Act, and shall continue. So, on the one hand, it is repealed. On the other hand, the other provisions which are not inconsistent with this Act shall continue. So, हाँ भी है, ना भी है. Sir, I am coming back to clause 9(1). This section, according to me, fails to specify the procedures to be followed for interception by the authorized postal officer. What is the procedure that shall be followed by the postal officer while intercepting? National security, everyone, every citizen of this country is concerned. We are also concerned. Had there been any provision that based on the information received from central agencies who are dealing with the national security point, then also we could have agreed to this provision. But mere suspicion, on the basis of suspicion even, that authorized officer can intercept, open, destroy, anything he wants to do. Sir, this is arbitrary. This is arbitrary. And in plethora of cases, the Supreme Court has held that arbitrariness in executive action is antithesis to law, antithesis to rule of law. This government has not even shown any respect to the hundreds of
case laws which have established this point. Sir, the grounds specified for interception is absolutely vague, that anything and everything can be brought under this provision. For example, the expression emergency, one of the expressions is emergency, other than national security. But the expression emergency has not been defined in the definition clause, that is clause 2 of this bill. So what is emergency? Nobody knows. Sir, this provision has given unbridled powers to the authorities concerned. And I remember one of the Supreme Court verdict, which was given in 1996, in the case of interception of telecommunications, where the Supreme Court held, that was a 1996 case, that a just and fair procedure to regulate the power of interception must exist. Otherwise, it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) as a part of the right to life, the freedom of speech and expression, and Article 21, right to privacy, as a part of the right to life and liberty. It was reiterated in the People's Union for Civil Liberties versus the Union of India in 2004. Sir, in this context, I would like to refer another act passed in this year, the Jan Biswas Amendment of Provisions Act 2023, which removed all offences and penalties from many acts, including the Indian Post Office Act 1898, in the name of ease of doing business and ease of living. And virtually, in my opinion, the Act has turned to be Jan Avishwas Act inasmuch as it has ensured a free-for-all situation for the wrongdoers in detriment to public interest. So in this bill also, Clause 10, Subclause 2 provides, and I quote, "No officer of the post office shall incur any liability with regard to a service provided by the post office unless the officer acted fraudulently or willfully caused loss, delay, or misdelivery of service." However, what would be the consequences if any postal officer fraudulently act or willfully cause loss to service? There is no such provision. Sir, kindly, 1 minute. In the Parent Act of 1898, there was provision for imprisonment up to 2 years and fine or both. That has been removed. This bill does not whisper about the private courier services, and they have been excluded from the purview of the bill. This undermines the equality before the law. This is too much of laissez-faire. Sir, finally, I submit that this bill, if passed, shall create another avenue in transforming our democracy into a surveillance state after the Pegasus Gate. And this is why I oppose this bill in its entirety on behalf of my party, All India Trinamool Congress. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mani Sukhendu Sekhar Rai ji. Now, Honorable Sri P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. I raise to express my strong opposition to the Post Office Bill 2023 in its current form, as it will lead to winding up of post offices and its services in India. Bill is a step to privatize and encourage private players in postal services. The bill is introduced without studying the services required
in the competitive world. It lacks a complete blueprint on infrastructural upgrades, technological intervention for sorting and facilitating accurate delivery of mails and parcels, and appears to be a hasty exercise just to replace old colonial laws. Our prestigious India Post, which is the world's largest postal network, has its presence across every nook and corner of our country, serves as a vital link connecting urban and rural India. Often viewed as a lifeline for 1.4 billion Indians, it plays a crucial role in our daily lives. The proposed bill, aimed at replacing the India Post Office Act 1998, needs an immediate reconsideration, as certain provisions could have far-reaching implications. Under Clause 9, the central government can empower any postal officer to intercept, open, detain any postal article on the grounds of security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency of public safety. The provision grants unfettered powers to the union and officers to arbitrarily intercept, open, or detain any postal article in the garb of national security or public safety. In the absence of any procedure or yardsticks or guidelines to be followed by such officers, such powers are nothing but another steps towards the surveillance state, which is violation in the teeth of Article 14, 19(1)(a) and Article 21 of the Constitution. It is pertinent to mention that the Honorable Supreme Court in a catena of judgments has upheld the ethos of right to privacy. I ask myself the question as to how any officer of the post office is qualified to undertake such functions which are in the nature of the search and seizure. By granting such powers, the privacy of all the citizens who use services of Indian Post is severely compromised, since there is no provisions in the bill which injuncts the officer from leaking any contents of the intercepted postal articles. A son will be writing to his mother, a husband will be writing to his wife, brother to his sister, a client to his lawyer, lawyer to the client, cabinet communications to the other departments. Can you intercept these communications as stated in Clause 9? Will it not affect the privacy, or it will affect the confidential privileged communications which are protected under the law? Clause 10 exempts the post office from any liability with regard to the service provided by the post office. This provision is severely vague and suffers from the ambiguity on the phrase such liability in section 10(1) can be interpreted to be anything. The provision makes no regard to the value of the articles to be dispatched through post. Many private players, in case of any lapse of services, will provide options such as the value of the articles in the transit or money back guarantee. However, the Indian Postal Department seeks to absolve itself from compensating from any loss caused due to the lapses in services. This indeed can open the way for abuses, as the party empowered to impose such rules is an interested party. Though it prescribes liability for postal officers who are acting fraudulently or willfully causing losses, delay or misdelivery, the consequence of such action is not provided in the bill. This dilutes the provisions of the earlier Act 1898, which prescribes imprisonment, fine, or both in the above cases. Clause 10, thus, is highly arbitrary and discriminatory and pushes the people to skip the Indian postal services. The bill, under the statement of objects and reasons, aims to provide for a simple legislative framework to facilitate evolution of the post office for delivery of citizen-centered services. However, the provision shows that such evolution is only backwards. The bill grants the parallel powers to both the Union and also to the Director General to frame rules and regulations for conducting any functions essential for running of a post office. This highlights the ambiguity and overlapping powers of central government and the Director General in framing the rules and regulations for delivery of several postal services. I request this House, while we recognize the importance of modernizing our postal services to be competitive with the private players, and it's crucial to strike a balance that upholds constitutional principles, protects fundamental rights, and ensures accountability. Our rich postal heritage, serving millions across the nation, deserves a legislative framework
that reflects the spirit of transparency, fairness, and citizen-centric governance, and not another source for surveillance state and affect the fundamental rights of speech and reputation. Thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you. Thank you, Mani P. Wilson ji. Mani Sri Raghav Chadha. सर, अपने 115 दिन के सस्पेंशन समाप्त होने पर पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूं और इस नए संसद भवन में पहली बार बोलने जा रहा हूं, तो आपका संरक्षण चाहूंगा सर। 5 मिनट समय आपका। आप इसे मेडन स्पीच भी मानकर मुझे अधिक समय दे सकते हैं अगर चाहें तो। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें 2 बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट कोड, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया है। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपन्ड or detained in the interest of 1, security of state, 2, friendly relations with foreign states, 3, public order, 4, emergency, and 5, upon the occurrence of any contravention of any provisions of this act or any other law for the time being in force। यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है। इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें, सरकार को मालूम रहे। ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है जिससे ये बिल पूरी तरीके से पीड़ित नजर आता है सर। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो समस्या निकल कर आती है वो ये है कि ये बिल प्रोसीजर स्पेसिफाई करने में फेल हो जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके तहत आप किसी डाक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। ये एक आर्बिटरी शक्ति नहीं हो सकती है, ये शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसे कौन से इमरजेंसी या फ्रेंडली स्टेट्स को आप फायदे पहुंचाने चाहते हैं जिसके चलते, या खास तौर पे किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का कोई वायलेट होता है तो वो आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। ये इसमें दूसरी बड़ी खामी है सर। तीसरी बड़ी खामी है कि जिन ग्राउंड्स को स्पेसिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड्स के तहत आप किसी के भी डाक को या शिपमेंट को खोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स बहुत वेग हैं। वो किसी भी शिपमेंट को रोकने के लिए या किसी भी कंसाइनमेंट या चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून पकड़कर या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने वेग ग्राउंड्स ये कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा जो इस बिल से है कि जो अफसर इसको इंटरसेप्ट करेगा या कॉन्फिस्केट करेगा, अगर वो अफसर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे पूरी आजादी है। पांचवा, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है सर। इसके साथ एक और मैं खतरनाक चीज बताना चाहूंगा कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्रिवेसी का एक हाल ही में वायलेशन मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ हुआ, जब हमें अपने स्मार्टफोन पर, एप्पल के स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में सर ये लिखा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने आपके फोन को इन्फेक्ट कर दिया है
और इसके जरिए वे आपके कैमरा, आपके माइक, फोन का जो माइक होता है, और फोन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो है उसके निगरानी में आ जाते हैं, उसकी पोजीशन में आ जाते हैं। ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं सर, देश के कई सांसदों के साथ हुआ। और दिलचस्पी की बात यह है, और खतरनाक बात मैं कहूं वो ये है कि ये सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ, ऐसा जानकारी आई, और इसमें एक शायद सत्ताधारी पक्ष के भी सांसद थे। ज्यादातर जो लोग इसमें पाए गए, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके मुताबिक विपक्ष के या सरकार के आलोचक थे। ये एक बड़ा खतरनाक हमला फोन्स पर हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसमें जांच करे, आपके अध्यक्षता में सर वो जांच हो सके तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो कि किस प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स पेगासस नाम के और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जो लोग आप कह सकते हैं आलोचक हो सरकार के या विपक्ष के नेताओं, उनके फोन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं और चाहूंगा कि ये जो एप्पल का नोटिफिकेशन यहां बैठे कई सांसदों, विपक्ष के सांसदों के फोन पर आया, उसके बारे में सरकार कुछ अपनी बात भी रखे और इस पर जांच भी बिठाए। थैंक यू राघव जी। माननीय श्री निरंजन विसी, माननीय निरंजन विसी। Thank you, Honorable Vice Chairman sir, for giving me an opportunity to speak on the Post Office Bill 2023. Sir, the Post Office Bill will abolish the 125th year-old the Indian Post Office Act 1898. By virtue of this bill, the work of the post office can be easier. The bills aim to modernize postal services and merge them with Digital India. This includes offering online shopping, e-commerce solution, and digital payments. For this, I would like to congratulate our Honorable Minister of Communication, Sri Ashwini Vaishnav ji. Sir, the bill seeks to utilize the wide network of post offices to provide banking and insurance services closer to the poor, ST, SC, women, and farmers, which will boost rural development. There is a possibility of creation of jobs through expansion of postal and financial services, especially in rural areas, which can contribute to economic growth and reduce employment. But sir, the central government will appoint the officer if that officer feels that any parcel is against the security of the nation or can disturb the peace, then that officer can stop the parcel, open it and check it, and can confiscate it, and later such items can also be destroyed. But law and order is a state subject, sir, so the state government should empowered to verify the articles. The bill makes India's postal services globally competitive and will boost trade and facilitate international delivery and logistics, and also promote financial inclusion in rural areas, which will promote rural development. But sir, there are 272,000 Gramin Dak Sevaks in India, working in 156,000 post offices, branch post offices. They call the GDS Gramin Dak Sevak, also known as postmaster, branch postmaster, and Dak master in our rural areas. But sir, they perform the duty of postal life insurance, rural postal life insurance, India Post Payment Bank, Sukanya Samruddhi accounts, Mahila Samman accounts, delivering letters, parcel, articles, collecting and depositing of premium regularly. The Gramin Dak Sevak also distributing pension, stipend, wages of NRGS, wages of candle leaf pluckers in rural areas. But sir, the Gramin Dak Sevaks are not provided with traveling allowance or dinner's allowance or house rent allowance or pension or medical allowances, educational allowances for their children, leave benefit like regular employees of postal department. Sir, the GDS, Gramin Dak Sevak, those who are working in rural areas, they are doing more than 8 hours duty, but in some areas, some villages, there are no internet service,
And most of our Odisha, in our Odisha also, in rural areas, in western Odisha and southern Odisha, there are no post offices in various big villages and panchayat offices. And also, sir, there are no internet connectivity. So the postmasters are the postmaster, branch postmaster, dag masters, they are facing a lot of problems because they are using the digital mode services. So therefore, sir, I request our Honorable Minister to conduct survey in rural villages, rural areas, to provide better service for the farmers and women self-help groups and the students living in the forest villages, rural areas, and to make provision of internet connectivity and also communication facility. Sir, I draw the kind attention of Honorable Minister of Communications, Sri Ashwini Vaishnavji, through you, sir, that the GDS, the Gramin Dak Sevak, the postmaster, branch postmaster, should be provided with departmental status and their service should be regularized. Also, their insurance benefit, group insurance unutilized leave bill for 180 days, and increase service discharge benefit scheme from 3% to 10%, sir. And, sir, of the recommendation of Kamalesh Chandra Committee report in favor of Gramin Dak Sevak, the committee observed that the postal department depends on the successful management of the Gramin Dak Sevak. So, the Gramin Dak Sevak are the soul of postal department, sir. And it is difficult to survive without a soul. So their demand be fulfilled. Sir, with this, on behalf of my party BJD and my leader, Honorable Chief Minister, respected Sri Naveen Patnaik, I support this. Thank you. Mani Sri Ajodhya Rami Reddy Ala. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to share a few of my thoughts on the proposed amendments to the Post Office Bill 2023. Sir, there haven't been any amendments to this Colonial Act in the past 125 years, and I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in Parliament. There are few positives of this amendment. This bill increases the authority of the central government to intervene in such situations involving vital aspects such as security, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. More specifically, the bill allows for the interception, examination, or temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorized transportation of drugs and contraband products via postal services. Thus, I applaud this positive approach in addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network. Flexibility in pricing. There is also an enhanced pricing flexibility is considered in this bill, which is critical, especially in the context of an increasingly competitive business, which lets the postal services promptly respond to the market's ever-changing expectations. Furthermore, the services' independent pricing allows it to stay adaptable in the face of changing economic situation. The ability to alter service charges and pricing structures allows the department to ensure that its service remain affordable, accessible, and sustainable, even with economic conditions getting changed. In essence, this empowerment aligns with the Postal Department's mandate to deliver a diverse spectrum of citizen-centric services. Also, generalizing the nomenclature of interception of parcels. Sir, in contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the bill introduces significant shift in its approach to the interception of objects within India's postal system. The key distinction is in the usage of technology, wherein the present Act explicitly defines seized postal products
as those carrying explosive, dangerous, filthy, noxious, or deleterious substances, while the new bill, on the other hand, has broader and more inclusive phrasing. Recent data shows an increase in security threats and illegal activities related to postal system, not only in India but also globally. This purposefully change in terminology serves an important purpose as it broadens the scope of interception beyond the constraints of specified items, embracing a broader range of potential security threats and criminal activity involving mail shipments. By taking a more general stance, the measure recognizes the changing nature of security concerns. However, there are certain problems pertaining to this bill, and I would like to highlight a few of them, and I provide my suggestions to this. Powers relating to interceptable postal articles. It lacks procedural safeguards, raising concerns about potential violation of individuals' freedom of speech, expression, and privacy. Additionally, the ground of emergency as a basis for interception may surpass reasonable restrictions outlined in the Constitution. The term emergency lacks a precise definition, providing a broad scope for interception. This goes against constitutional principles established by the Supreme Court and requires more clarity. Exemption from liability for lapses in services, that also need to be looked at. The removal of offences and penalties. The absence of provisions for offences and penalties as they were removed in Jan Vishwas Act 2023 remains another issue. As per the earlier Act, various offences committed by officers of a post office, which included the illegal opening of postal articles by a postal officer were punishable. However, now such actions would have effectively no consequences. It raises questions about ensuring the privacy of individuals and may have adverse implications. Regulation of courier enterprises. Although the bill gives India Post Authority to improve its postal service operation, it is critical to recognize that regulatory environment for courier enterprises is still relatively underdeveloped. This regulatory void presents a number of significant questions. Issues faced by the employees of the department, my other colleagues have mentioned, I want them to be taken note of that. The key issues affecting the functionality of the system also need to be taken into consideration, the post offices lack necessary infrastructure to function successfully as points of service and information transformation. Issues such as intermittent power supply, outdated manual operations, limited accessibility shall still remain a problem. The revenue deficit also need to be taken into account. So, while I see that there are few issues that where we have given suggestions, but we strongly believe that this amendment is coming at the right time. The passage of this bill is an important step in the restructuring of India's postal services. By repealing outdated restrictions, this act guarantees that India's postal industry stays dynamic and inclusive, successfully adapting to the encouraging changes of requirements of its varied population. With this support from YSR Congress Party, we support this bill. Thank you, sir. Thank you, Manya Jodhya Rami Reddy ji. Honorable Shri A. Rahim. Honorable A. Rahim. Thank you, sir. Thank you for this opportunity, sir. I express my deep concerns and critique over Post Office Bill 2023. My objections against this bill are very specific. Sir, my first point is that this bill is against the Constitution and breaching the fundamental rights provided by the Constitution. Secondly, this bill is against the federal principles. Thirdly, through this bill, government is giving up the liabilities invested upon them. My fourth and final point is about the concern over the privatization of the postal services. Sir, I would like to start from my last point. Sir, I am bringing your attention to the objects and reasons for this bill, which states that this bill facilitates the evolution of postal services. In the light of this line, through you, I would like to ask the Minister that what the Modi government has done for the prosperity of the postal services. Sir, I would like to expose that since 2014, not even a single post has been created in the postal services. Sir, also I would like to remind
I would like to remind all of you that as of now, 90,000 existing posts are lying vacant. Sir, is this the evolution and prosperity of the postal services, sir? Sir, in this context, I have a deep concern over the privatization of the postal department. Sir, it is evident that when it comes together, non-creation of posts, lack of recruitment, with the introduction of this bill, paved the way for the privatization. Sir, now I am coming to my next point, is that according to clause 10 of this bill, sir, which states the bill has a significant omission concerning the consequences for officers who misappropriate or damage postal items, which used to be punishable offences, but is not addressed in this bill. Sir, this oversight will negatively impact the department's efficiency and the integrity of the officers involved, eroding trust in the services provided. Sir, my third point was that the bill is against the federal principles. Sir, this is the new normal phenomena of the Man Ki Baat era. Under the Modi regime, against the federalization, trying to, this is new normal. This is new normal in the Man Ki Baat era. The bill removes the authority of state government or their authorized officers to intercept a shipment, wasting this power entirely on the union government or its designated officers. Sir, this is a direct attack on federal principles. Sir, just 1 minute. Sir, I am going to my first and my prime point. Sir, this bill, according to the existing law, sir, this bill intentionally trying to breach the privacy. Sir, as we know that, according to the Constitution of India, privacy is part of our life. So privacy is the main thing, the fundamental right. So fundamental right. Sir, I would like to add one more thing, that the government is trying to change the grounds for interception. Sir, the interception of the shipment and the government, according to this bill, intentionally trying to breach the privacy. So this government, I would like to conclude by saying that we have to right to protect our privacy and urging this August House to omit the centralization and privatization tendencies of the Post Office Bill 2023. Thank you. Thank you, sir. Honorable Sri Abdul Wahab. Honorable Abdul Wahab ji, not present. Susri Kavita Patidar ji. Susri Kavita Patidar. माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पर बोलने की अनुमति प्रदान की। महोदय, जैसा हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस बहुत समय से पुराने धर्रे पर चले आ रहे थे। डाकिया डाक लाया वाला गाना भी हमने सुना था, हमने देखा भी है, और वर्तमान समय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो काफ़ी नहीं था। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके द्वारा इस बिल को सदन में लाया गया, और इस बिल में ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं जिसके कारण लाखों लोगों का भरोसा पोस्ट ऑफिस की तरफ और बढ़ेगा। माननीय महोदय, हम जानते हैं कि पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक केंद्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। आज पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ लोगों तक डाक पहुंचाने का नहीं रह गया है, बल्कि आधार सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, पार्सल पहुंचाना, पेंशन पहुंचाने का, ऐसी कई सुविधाओं को देने का काम भी आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं, खासकर पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया जाना। इस बिल के माध्यम से उन्हें सेवाओं से जुड़ी जरूरी नियम बनाने की छूट होगी। वे मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज की दरें तय कर सकेंगे। अभी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बिल से लोगों की प्राइवेसी पर खतरा है, जबकि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस बिल में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
इस बिल के माध्यम से अगर अधिकारी को लगता है कि पार्सल के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो अधिकारी के पास ये शक्ति होगी, वे खुद पार्सल को खोलकर देख सकेंगे और उसे रोक सकेंगे और जब्त भी कर सकेंगे। ये किसी प्राइवेसी पर खतरा नहीं, बल्कि इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया गया है। साथ ही यदि किसी पार्सल को डाक का अधिकारी अगर संदिग्ध पाते हैं या उसकी ड्यूटी नहीं भरी गई हो या उसमें किसी तरह का कोई गैर कानूनी सामान हो, तो डाक अधिकारी सीधे कस्टम विभाग को सूचित करेगा, जिसके बाद कस्टम विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और इसकी बिक्री से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में डाकघर को माननीय मोदी सरकार द्वारा एक जीर्ण होती संस्था से ट्रांसफॉर्म करके विकसित बनाया गया है। न सिर्फ डाक सेवाएं बल्कि 100 से अधिक सिटीजन सेंट्रिक और वित्तीय समावेशन सेवाएं डाकियों द्वारा आज नागरिकों के घर द्वार पर दी जा रही है। जहां 2004 से 2014 तक 660 डाकघरों को बंद किया गया था, वहीं मोदी सरकार द्वारा 2014 से 2023 तक 5000 नए डाकघर खोलने का काम किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5746 और नए डाकघर खोले जा रहे हैं, जिससे देश के कोने कोने में जन सामान्य तक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सुगमता से पहुंचाई जा सके। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में डाकघर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे वह बेटी बचाओ अभियान के तहत लाई गई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हो या महिला सम्मान बचत पत्र हो या डाकियों द्वारा घर घर जाकर खोले गए खाते हो, आज डाकघर महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। 26 करोड़ बचत खातों के साथ डाकघर आम जनता के लिए बचत की एक भरोसेमंद संस्था बन गई है और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। डाकघर बचत केंद्र और डाक जीवन बीमा में जनता के कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 वर्षों में ही 8 करोड़ खाते खोलकर मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। इसके विपरीत पिछली सरकार द्वारा खोला गया भारतीय महिला बैंक हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के कारण मात्र 3 साल भी नहीं चल सका। डाकघर विधेयक 2023 एक बहुत सरल लेजिस्लेशन है और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को सुनिश्चित करने का प्रयास है। यह डाकघर को और अधिक सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा, ऐसा हम सब आश्वस्त हैं। पुनः मैं माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री कविता पाटीदार जी। ऑनरेबल वी विजय साई रेड्डी। Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you for giving me an opportunity. And we should appreciate the Honorable Union Minister for Communication for introducing this bill, Ashwin ji. Sir, this bill is a step towards 3 pillars of good postal service. One is reliable, and second is reach, and third is relevance. Sir, however, I have 3 suggestions to be made to the Honorable Minister, if Minister permits me. The first one is rethink pricing to increase the profitability. Sir, over the last decade, the loss incurred by the postal service has increased at least 9 times. Sir, the postal rates must be reconsidered to ensure that the subsidies for the poor do not go to that the subsidies what you are offering in so far as postal services are concerned do not go to the rich and it will get into the profit arena. Sir, the next point is pricing structure has to be rethought. Differential pricing, it is now uniform pricing. The differential pricing based on the location, there has to be a differential pricing, those post offices which are located in the rural areas, and differential pricing those post offices which are located in urban areas. Sir.
and the subsidy only those post offices that belong to the rural and economically weaker sections. So these sections and also regions. This will ensure the profitability, improve the profitability. Next point is digitization of services. Sir, the government should try to replace as many traditional services offered through digital solutions. For example, mobile transfer can replace money orders, and small saving activity can be redirected to the payment bank, and computers must be installed must be provided to all the post offices, and centralized software throughout the country for postal, banking, insurance and retail services in the post offices, which will facilitate insurance of train reservations, tickets, Aadhaar enrollment, updation of services. All these things will improve the profitability and also the quality of service to the rural areas, sir. Rural people. Sir, the third point which I would like to suggest, third suggestion which I would like to make to the Honorable Minister is payments bank and financial services in rural areas. The conception of India Post Payments Bank is a sound step and must be expanded through the training of the existing staff, thorough training of the existing staff to sell financial products like insurance, mutual funds and in the rural areas. This proves our commitment to sustainable financial inclusion and citizen empowerment. Post offices can be integrated with ENAM, E-N-A-M, that is E-National Agricultural Market Initiatives, where terminals can be kept in these offices for use by the farmers. So this is very important suggestion, sir. Sir, further, sir, Lok Sabha can be used to also form a link with the agricultural markets, that is ENAM markets, that as they have direct interface. These Lok Sabha have a direct interface with the farmers and can be given the responsibility of spreading awareness as well as being the link with the markets, sir, market prices, sir. With these aspects, suggestions, we support the bill and I commend the bill, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Honorable Sri Kanak Medla Ravindra Kumar ji. Please. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I am very thankful for giving this opportunity to participate in the discussion. Sir, at the outset, I extend the support and welcome the bill. Sir, this bill intends to replace the earlier Indian Post Office Act passed year in 1898. Section 16(1) of the bill provides for repealing the earlier act. Sir, over the period of time, post offices across the country are providing variety of services. People approach post offices for making Aadhaar card. Post offices are extending financial services. ATMs operated by post offices are in vogue nowadays. Sir, the earlier act mainly deals with mail services provided by the post offices. In the modern world, mail services are replaced by email services. Postcards are used rarely. Telegram service has been winded up by the government. Nowadays, only the government offices and its attached organizations, postal service are used for communication, official intimations, decisions, orders, etc. Under these circumstances, also with a necessity to appropriately use the existing human resources with the postal department, the government has brought this comprehensive bill. I welcome and support it. Though I welcome and support the bill, I have concerns which I hope that Honorable Minister, who has an able administrator, earlier take into consideration and resolve them. Section 3(1) says, what the services of the post office has to render will be decided by the central government. This section gives sweeping power to the central government. This, in view of the federal structures, this type of trend has to be checked out. Then Section 9(1) empowers the officer of any central government to intercept, open or detain any item or deliver item to customs authority. Such power will hamper the administration and will lead misuse of power.
and also the privacy of the public. So this section needs a relook. Sir, the bill aims at revamping the entire postal system. All the necessary arrangements that are proposed has to be kept in the bill itself instead of making the rule in this regard by the executive. I earnestly appeal the government to consider the above suggestions and take appropriate decision, make necessary amendments. With these vital submissions, I once again extend my support and felt gratitude for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Honourable Member. Shri Ghanshyam Tiwari ji, 12 minutes. माननीय उपसभापति महोदय, आज ये बिल जो लाया गया है ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी युग प्रवर्तक हैं। एक युग से सैकड़ों सालों से जो कानून पड़े हुए थे और जिन कानूनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, युगानुरूप उन कानूनों में परिवर्तन करने का साक्षी ये राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। और उसी प्रकार से इस बिल को लेकर आए हैं माननीय श्री अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार का अर्थ है देवताओं के चिकित्सक। तो ये देवताओं के चिकित्सक होने के साथ साथ रेलवे के, पोस्ट ऑफिस के और BSNL के चिकित्सक बन गए हैं। ऐसा बढ़िया बिल लेकर आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बिल में दूसरी जो बहुत बड़ी बात अच्छी है, जिसमें उन्होंने कहा है, भगवान कृष्ण ने तो ये कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि 4 वर्ण की मेरी सृष्टि है। लेकिन मोदी जी ने कहा है चातुर्जाति मया सृष्टम, कि मेरी सृष्टि में 4 जातियां हैं, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ये 4 जातियां उनकी है और ये चारों जातियों को ये हेल्प करने वाला बिल है। उदाहरण के लिए माननीय मैं सभापति उपसभापति महोदय में कहना चाहता हूं कि एक बात की, केवल इस बिल के एक बात की प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आलोचना की, वो सेक्शन 9 और 10 के बारे में। वो कह रहे कि इंटरसेप्ट करने का अधिकार क्यों है, ये प्राइवेसी पर हमला है। और इससे भाई इस देश में प्राइवेसी है पर इस देश की सुरक्षा भी है। अपने बहुत बार देखा है जब पार्सल बम जाते थे और जगह जगह बमों के धमाके होते थे। इस देश में अब बमों के धमाके होना शहरों में बंद हो गया है, पार्सल में धमाके होना बंद हो गया है। तो आइंदा आगे धमाके नहीं हो, इस काम के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, आज जब जन धन खाते खोले गए थे तो कहा गया था ये बिना उसके खाते खोल रहे कहां से पैसे आएंगे। आज उन खातों में कितने रुपए जमा हो गए। आज गांव का गरीब आदमी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में जाकर अपना खाता खोल सकता है, अपना काम कर सकता है। उसके पहले तो उन्होंने तो इस पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को बंद करने का मानस बना लिया था, पोस्ट ऑफिस बंद करने लग गए थे। तो एक जो मृतप्राय संस्था हो गई थी, उस संस्था को जीवन दान देकर उसको नया स्वरूप दिया है, उसको परिष्कृत किया है। उसके परिष्कृत करने को ये बिल है, इसमें 16 प्रावधान किए गए। तो 16 श्रृंगार होते हैं अपने यहाँ पर शास्त्रों में, तो 16 उपबंधों के साथ इसके श्रृंगार किए जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के। तो ये श्रृंगार करने का जो ये बिल है उसको वो श्रृंगार से भी बचाता है। तो मैं इसलिए श्रृंगार बोल रहा हूं कि इसके पहले कहा गया कि कबूतर पहले प्रेम का संदेश लेकर जाता था। हमारे यहाँ पर गाए जाते कुर्जाएं थारा भंवर मिला दे, मेरा भंवर मिला दे, तो कुर्जा गाई जाती थी, तो कबूतर के गाए जाते थे। यहाँ तक होता था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल। लेकिन अब तो वो खत जाता ही नहीं। इसलिए अब ये लोग कई बार चर्चा करते हैं कि साहब इसमें प्राइवेसी खत्म हो जाए। भाई ईमेल का इनका जमाना, लोग ईमेल करते रहते थे, रोज चैटिंग करते हैं, हाय हेलो करते रहते हैं, इसमें किसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है। ये तो बिल्कुल एक इस प्रकार का बिल है जिस बिल में एक इसके बाद में सरकार के आने के बाद में
1 लाख लोगों को नया रोजगार इसमें दिया गया है। 5,000 से 7,000 ज़्यादा नए खोले गए हैं। इसके अलावा पासपोर्ट बनाए गए हैं। गांव में पासपोर्ट बनने की कौन सोचता था? पासपोर्ट बनने के लिए शहर में जाकर लाइन लगाओ, MP की सिफारिश कराओ, MLA की सिफारिश कराओ, इतना नाटक करो, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, मानसिक विकृति की समस्या है। लगातार कोई आदमी हार का सामना करे और लगातार उनकी बातें उनके खिलाफ आए तो वो बैठ जाता है, और बैठ जाने के बाद में वो बोलता है फर्जी डिग्री। अरे किस पर चर्चा हो रही है? ये चर्चा हो रही है पोस्ट ऑफिस के बिल पर। लेकिन जो प्रहार हुआ है कल, जो राजस्थान हिंदुस्तान की जनता ने जो प्रहार किया ना, उसे विचलन हो गया है। उस विचलन के कारण से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने केवल ये एक बिल लेकर नहीं आई, अब 3 बिलों की भी आज चर्चा की गई जो अपने यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। सारे कानूनों में संशोधन होना है। जन विश्वास कानून लाया जिसमें 43 कानूनों में संशोधन किया, और उनमें जो आपराधिक सजा के प्रावधान थे वो खत्म किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग लाइफ, इसको करने के लिए सारा काम किया गया है, और ये सारा युग परिवर्तनकारी काम है, और युग प्रवर्तक के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए सदन इस बात का साक्षी है कि इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से हम आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात करेंगे, हम गांव में पासपोर्ट बन जाए उसकी मांग करेंगे, गांव में खाता हो जाए। अब आप गांव से एक्सपोर्ट हो रहा है, कई नाम माननीय मंत्री महोदय ने बताए, इस प्रांत के इस गांव से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 40 देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसलिए ये सारा बिल मैं समझता हूं कि सब योग्यताओं के साथ और बहुत संक्षिप्त विधेयक, और आगे के लिए आगे की बातों को ध्यान करने के लिए दूसरी बात ये कही गई कि ये कंपटीशन का नहीं है। आज कोरियर सर्विसेज हैं, आज कई लोग कहें ये PSU आवश्यक है, सरकारी कुछ होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए रेलवे में कितना सुधार हुआ। आज रेलवे के प्रोडक्शन में जब प्राइवेट भागीदारी बढ़ी तो रेलवे का कितना सुधार हो गया, पोस्ट ऑफिस में कितना सुधार हुआ है, डाक सेवाओं में कितना सुधार हुआ है। ये सुधार के लिए आज कोरियर सर्विसेज हैं, तो कोरियर सर्विसेज से भी बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए ये सारा जो विस्तार का काम है, वो विस्तार का काम करने का जिम्मा इस सरकार ने लिया है। क्योंकि पिछले 12 में जो सरकार थी वो तो लीक पीटती थी कि ये बिल बना हुआ है, इसमें ये अमेंडमेंट कर दो। ये सरकार जो है वो बिलों को नए स्वरूप में लेकर आ रही, आज की आवश्यकता के अनुसार, आज के समय के अनुसार, और भारत का बढ़ते हुए स्वरूप और भारत की आगे की आवश्यकताएं, उन सब कामों को लेकर ये बिल लाया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को भी इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में माननीय उपसभापति महोदय 11,000 से अधिक पंचायत और 44,000 से ज़्यादा गांव हैं। उन गांवों तक कोई बैंक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन पोस्ट ऑफिस उस गांव तक पहुंचा गया है, और उस पोस्ट ऑफिस में गांव का आदमी अपना सेविंग बैंक का अकाउंट खोलकर, अपना पासपोर्ट बनाकर, अपना रुपया लेकर अपना एक्सपोर्ट करने का काम कर सकता है। इस प्रकार का अच्छा विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। Yeah, I was attending a parliamentary committee meeting, that is why I was delayed, sorry for that. And during the time also the committee meeting is coming, that is also another problem. Anyway, I am opposing the bill for the reason that after a long time such a bill came and it was needed and warranted, but some provision in that one is the bill allows employees to open postal parcels in the interest of national security. But all other agencies, then it is people will love to go to other agency because we are sure that they will open
And even if security, non-security, that will be a practice. And there is no provision which says the post office and its officers shall be exempt from any liability by any reason of any loss, misdelivery, delay or damages in the course of providing service. How can you give this completely open hand? Give some restrictions somewhere. And flexibility to post service to fix prices compete with the fiercely competitive industry. Definitely it is a competitive industry, courier service and all. So government should be, this is not a governmental business, it should be for the benefit of the public. So there should not be such what you call private, in the name of competition, they cannot fix any right. Indian Postal Service is known for its service before and it should continue. The reason for I am opposing the bill is no privacy on the letters and parcels sent by clients. There are no consequences for unauthorized opening of postal articles, no liability on post offices or on laws. The price of Indian Post Service may go unaffordable to common people. That's why I am opposing this bill. Thank you very much. Manya Dr. Fauzia Khan ji. Thank you very much, sir. So the intent of this bill ought to have been the strengthening of the network of the postal services framework in India to make it more robust, modernized, and speedier. But the legislative intent of the bill doesn't seem to be anywhere near these objectives, sir. It's like trying to fit a giraffe into a mailbox. It aligns more with the plan to turn us into the most surveilled nation. Sir, in the current scenario in India, there has been an erosion of trust in almost all government-provided services. The diminution of this trust has led to more inclination towards private services. Sir, the proposed bill should not solely focus on transforming post offices into financially viable entities, but it should also emphasize the need for operational efficiency. It is important to position them as the preferred choice of the public. Sir, ज़माना अब बदल गया है और जैसे घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि अब हमारे पत्र कबूतरों के माध्यम से नहीं जाते हैं यहाँ वहाँ। मिर्ज़ा गालिब ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी, क़ासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। तो ये जो धीमी धीमी रफ्तार थी वो अब नहीं है, क्योंकि ज़माना तेज़ हो गया है। अब जीवन जितना गतिमान हो गया है, पोस्टल सर्विसेज को भी उतना ही गतिमान होना होगा। प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के स्पीड को मैच करना होगा। Sir, private services, by the way, have not been brought within the purview of this act, and I wonder why. My point number one is, why do we need these services? I think the department has to make proper utilization of the growing needs of digital banking services. That's why this has come in. But we still have to talk a lot about infrastructure, how to modernize this infrastructure. Nothing like this has been mentioned in the bill. Then why is the burden of pricing being shifted entirely to the postal department? Do we have any ceiling on this? The bill specifies no mechanism on how the prices are going to be regulated by the department, sir. Our focus ought to be improving services for the public and not making money. Sir, the Act exempts the government from any liability related to theft, misappropriation, etc., which has been expressed by many of us. Officers are also exempt from all liability. In fact, the Jan Vishwas Amendment Provisions Act 2023... Honourable Member, please conclude. Please conclude. Take 30 seconds, conclude. All right, sir. So, what I want to say is that officers have got an immunity shield and they may indulge in corrupt practices through it. And we are left with our privacy dancing in the monsoon rain without an umbrella. So I think, sir, it is important that we are concerned about privacy, we are concerned about security concerns are all right, but we cannot
undermine the need for privacy. Thank you, sir. माननीय श्री लाहर सिंह सिरोया जी। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस बिल पर बोलने के लिए बुलाया और मैं पार्टी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया है आज। ये बिल अध्यक्ष जी मैंने देखा है जो 125 वर्ष पुराने कानूनों को बदलकर नए कानून लाए जा रहे हैं। और आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस संस्था हमारे दिल से जुड़ी हुई है वर्षों से। आज उसको उन्होंने बचाए रखते हुए उसको आधुनिकीकरण पे ले जा करके आज उसका मैं आपको एक दो उदाहरण देके बताना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, मैं उपाध्यक्ष जी, मैं वैसे तो IT सिटी बेंगलोर से रह रहा हूँ 50-55 वर्षों से, और IT सिटी बेंगलोर से आया हूँ जो देश की IT राजनीति के रूप में जानी जाती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हमारा शहर बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन मेरा बचपन राजस्थान के गाँव में बीता है और मेरा बचपन विशेष तौर से जो 5-6 वर्ष का जब तक था मैं मेरे ननिहाल में रहा, तो एक हफ्ते में एक बार डाक आया करती थी और पूरी एक लाइफ लाइन थी पूरे गांव के लिए। और वो डाकिया इतने समर्पित होते थे कि जो गांव में जो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको चिट्ठी पढ़कर सुनाया करते थे। तो डाक संस्था जो है हमारे दिल से जुड़ी हुई है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है और गांव की लाइफ लाइन है। जो मेरी उम्र के जो लोग हैं इस बात को मैं समझता हूँ जानते होंगे। तो ये और एक और बताना चाहूँगा, आज जो हमारा चरित्र निर्माण हुआ है, आज जो इस सदन में जिस वजह से मैं पहुँचा हूँ उसमें हमारे बचपन में जो हमें साहित्य मिलता था, मुझे याद है कि गोरखपुर में जो हमारी संस्था है गीता प्रेस, वहाँ से कल्याण नाम की पत्रिका आया करती थी और हमारे पिताजी उसके ग्राहक थे, नियमित ग्राहक थे। तो हर महीने वो कल्याण पत्रिका हमारे घर पर आया करती थी और उस पत्रिका को हम पढ़ते थे बचपन में। और कोई हमारे पूरे से देश के जोड़ने का में कोई और तरीका नहीं था हमारे पास में। तो उस कल्याण में हमने पढ़ा कि तमिलनाडु में तिरुपल्ली कुंड्रम नाम का कोई पक्षी तीर्थ है, तो पूरे देश से जोड़ने का हमें अवसर मिलता था। और जो पत्रिकाएं जो महीने की आती थी वो डाक से आया करती थी और चिट्ठी आती थी जो से डाकिया डाक लाया, आपने सब कुछ कहा है, तो उसका तो मैंने भोगा है, अनुभव किया उस बात को। तो ऐसी डाक संस्था को जो करीब करीब समाप्त होने जा रही थी विकास ऑफ आधुनिकीकरण की वजह से, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से आपको को जोड़ा गया, जिसका वर्णन हमारे लक्ष्मीकांत जी ने कहा है और भी हमारे साथियों ने कहा है। चाहे ये पासपोर्ट वाला हो, ये डिजिटल पेमेंट वाला हो, सेविंग बैंक्स वाले हो, इंश्योरेंस हो, कई तरह की चीज़ें पोस्ट ऑफिस से जोड़ा गया। और आपने देखा होगा 1.5-2 वर्ष पहले जब पूरे देश के पोस्टमैनों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब उनको उद्बोधन दिया था, उनको संदेश दिया था, उस समय मैं भी उस एक किसी कार्यक्रम में मौजूद था। तो जो उस जमाने के जो हमारे पोस्टमैन आते थे, हमें चिट्ठियां पढ़ के सुनाते थे, उसका दूसरा रूप हमें देखने को मिला है। जब मैं अभी बेंगलोर आ रहा था 2 दिन के पहले, मैं मेरे घर के बाहर खड़ा था, एक स्कूटी में एक बालिका आई, पीले ड्रेस में थी। मैंने कहा कौन है, तो वो एक चिट्ठी देने आई मेरे को, पोस्ट हमारे कोई सरकारी चिट्ठी या पता नहीं कोई चिट्ठी थी, जो मेरे को देखा, मेरे घर के बाहर स्कूटी खड़ी की। तो महिलाओं को और इस तरह से जिनको रोजगार इतना मिला है उसका साक्षी हैं हम। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो उसमें हमने आंखों से देखा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना का ये है कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस जो इस संस्था को इसको बहुत आगे बढ़ाया और आधुनिकीकरण के रूप में लेकर के आज इसका जो लाखों कर्मचारियों को एडिशन किया। और पोस्ट ऑफिस में जो आज जो चहल पहल दिखाई दे रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अपने नए इस धरोहर को नए युग के साथ जोड़ने का जो उनका हमेशा ये कल्पना रही है, हमारी हर धरोहर को हर जगह उसको कैसे आधुनिकता के साथ जोड़ करके उसका कैसे देश के लिए उपयोग किया जाए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विषय रहा है। और ये जो मैंने इसको विस्तार से इसको देखा है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी,
इसको आदरणीय वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी ने, जो संजोग से मेरे पड़ोस के जिले के ही गांव के हैं, हालांकि लोग उनको उड़ीसा का भी समझते होंगे, लेकिन उनका जो जिला है मेरे पड़ोस के उस गांव के हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से, मैंने एक का एक देखा है और हमने पहले भी स्टडी किया है, जो हमारे कमेटी में चर्चा में भी आए हैं ये विषय। तो जिस विस्तार से उन्होंने ध्यान रखा है, अपनी इनको जिम्मेदारी, सतर्कता की ध्यान रखा है, जिम्मेदारियों का ध्यान रखा है, और उसके पोस्ट ऑफिस के अधिकारों का ध्यान रखा है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और वो नियमावली कैसे बने। अब ये कुछ लोगों को बाद में इमरजेंसी दिखती है, ये कि ये इमरजेंसी में क्या होगा, इमरजेंसी में क्या किया नहीं हुआ। चिदम्बरम साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनको पता है क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या किसने किया। और उसमें तो आर्टिकल 356 भी प्रावधान है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में कई लोगों की मांग होते हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस ने मांग की थी कि उसमें वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कई जगह से मांग उठी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखते हुए, अपने आज़ादी का ध्यान रखते हुए, आज तो एक दिन भी किसी भी राज्य में 356 जरूरत होने के बावजूद भी नहीं लगाया और संयम रखा। और कांग्रेस कितनी बार 356 का उपयोग किया है। आज खरगे जी साहब नहीं है, मैं समझता हूँ कि आज तो होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो कितनी बार उन्होंने 356 का उपयोग किया, बिना कारण के किया। और ये हार जीत चलती रहती है, उनको इतना ये डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना को कंसोलेशन दे दिया गया है, वो हमारी गलतियों से, और समझो कि वहाँ भी जो भ्रष्टाचार का वो चल रहा था, उसके चलते वो सरकार को जाना पड़ा। कोई ये इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है, इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है। तिवारी साहब, आप आगे, तिवारी जी आगे बढ़िए, आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए, मैं समझता हूँ आपके नेतृत्व में ज्यादा सीटें आएगी। माननीय सदस्य, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज 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 एड्रेस द चेयर प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अधिकारियों ने वैष्णव जी के नेतृत्व में बहुत विस्तार से इस बात का ध्यान रखा है, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रोविजन का इसके लिए किसी का अधिकारों का हनन नहीं होगा। ये सरकार बहुत ईमानदार सरकार है और ये कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने वाली है। आप विश्वास रखें, आपको चोर के दाढ़ी में तिनका दिखता है, उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। आपका वहम का इलाज तो नीम हकीम के पास भी नहीं होता है। आप ये वहम करना बंद करें। और हमारे मित्र चले गए हैं शक्ति सिंह जी, वो जहर कर रहे थे बार बार। अरे अब तो जहर उगलना बंद कीजिए। बहुत देश में जहर फैला चुके थे आप, उसको हम दोते हमारे को इतने वर्ष हो गए, अभी पुरानी तौर। अब ये जहर फैलाना बंद कीजिए। ये जातिवाद का, क्षेत्रीयतावाद का, भ्रष्टाचार का, इस जहर को अब अपने तक रखिए और उसको कम से कम सदन में तो नहीं फैलाएं। किस जहर की बात कर रहे हैं? ये पूरा देश है। मैंने कहा ना, मेरे बचपन में जब मैं 5-7 साल का, 10 साल का था, तब हमने तिरुक्कली कुंड्रम का नाम, पक्षी तिरुक्कल का नाम हमने राजस्थान के गांव में सुना। वो किसकी वजह से सुना? ये डाक संस्था की वजह से सुना। अगर डाक के सिवाय कोई हमारे गांव में कोई लाइफ लाइन नहीं था, किसी चीज़ का कोई हमारा संपर्क नहीं हो सकता था, तो उस जमाने से हम आए हुए हैं। तो इस डाक संस्था को आज उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर उन्होंने जो संस्था को आधुनिकीकरण करते हुए आज पोस्ट ऑफिस को घर घर में प्रचलित किया है। कितनी सेवाएं मैं गिना सकता हूं, अगर आपके पास मुझे समय दें तो कितनी मैं सेवाएं गिना सकता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कई कानूनों को चेंज किया, जैसे हमारे घनश्याम जी जिक्र कर रहे थे। इन सारी बातों को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो है इसमें कहना उल्लेखनीय यह है कि इस पोस्ट ऑफिस में जो सेवाएँ चल रही है उसमें आज भी आप देखो, हम सब लोग शहर में बैठे हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाला आज भी इस पोस्ट ऑफिस के आश्रय पर जी रहा है। तो इस पोस्ट ऑफिस की संस्था को हमारे को बनाए रखना है और पोस्ट ऑफिस का अवांछित तत्व, इसका दुरुपयोग नहीं करें, इसका ध्यान रखते हुए। हाँ, गोयल जी आ गए हैं, मैं गोयल जी का जिक्र कर रहा था। गोयल जी ने मेरी भावनाओं को छेड़ा था, पुराने बात की, कबूतर की बात की, तो मुझे भी लगा कि आज ये क्या हो रहा है। और गोयल जी, आप तो मेरे मित्र हैं, मैं आपके बड़े आदर करता हूं और आप भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का आदर करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन ये जहर कहना बंद कर दीजिए, जहर उगलना बंद कर दीजिए। जहर आपके अंदर में है, उसको आप बचाइए, लेकिन जहर मत घोलिए। आज देश में इतना अच्छा वातावरण है,
आज पूरे विश्व में आज हमारे भारत की प्रशंसा हो रही है। मैं कई लोगों को कई लोगों को मिलता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ आज इस जगह इस हॉल में मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता, मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि देश विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बड़ी है। आज जो भी मुझे फॉरेनर्स मिलते हैं, जो एनआरआई जो आके मुझे मिलते हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज में विश्व में हमारी भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। अब पूरा जब विश्व हमारा सम्मान कर रहा है, हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे मोदी जी का आदरपूर्वक चरण छूने की प्रयास करते हैं, ऐसे समय में आप कम से कम, आप तो गुजरात के हैं, आप तो इस बात को ध्यान रखें कि मोदी जी कितना समर्पण से ये देश की सेवा कर रहे हैं। और आप बार बार जहर की बात करके, गोयल साहब मैं आपका मित्र हूं और आपका भला चाहता हूं, आप ऑपोजिशन आप इधर आइए। तो मेरा कहना है, तो मेरा इसलिए कहना हो कि मैं इस पूरे सदन से ये उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं इस पूर्ण बहुमत से इस बिल को आप पास करेंगे। और इतना जो सुंदर बिल आया है, इन्होंने अधिकारियों ने जो मेहनत की है, अश्विनी वैष्णव ने जो मेहनत की है और प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया है, इस बिल का आदर करते हुए इस बिल को 2-2 में पास करें। और यही मेरा निवेदन है। और मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों को उनकी तेलंगाना की जीत की बधाई भी देता हूँ कि आप वहाँ जीते हैं। चिदम्बरम साहब का मैं आदर करता हूँ, आपको भी बधाई। और मैं तो चाहता हूँ कि आप अपनी सीटें अगले चुनाव में इंप्रूव करें। आज 55 से 70 तक पहुँचें, लेकिन जिस तरह से आप ये जहर घोलने की बातें करते हैं, जिस तरह से आप विघटन बातें करते हैं, मुझे लगता है कि आप 55 से कहीं 27 में नहीं आ जाएं। आप जनता का आदर करना सीखें और जनता के जो उन्होंने निर्णय दिया है उसका आदर करें। और देश के प्रधानमंत्री का भी आप आदर करें। और जो देश में अच्छा वातावरण बना हुआ है उसको जहर से उसको दूषित न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Dr. M. Thambidurai ji. Chairman sir, thank you very much for me giving the opportunity to participate in the discussion on the bill brought by Honorable Minister regarding the Postal Services Act. Sir, it is many members spoke about the history of the postal system, how it developed in India from 1766 onwards. East India Company when they started, then afterwards in 1854 how the act it came, then after independence how it served for the whole human our Indian people. Sir, this is very important service which requires for the rural people especially. Modern days nowadays we are having so many systems for delivering our goods or letters and everything. At the same time, but still rural areas, we are depending on the postal department. Without that, we cannot do it. The postal department, according to the minister, not only serving the letters, Honorable Prime Minister's program also regarding giving the help for the poor people, bank accounts, everything, financial transaction also, the bank is going to do that. It's very essential. Therefore, the postal, even though so many private people have come in courier service, still we are proud of that the postal department as serving for the common man, especially not only delivering, as I said, other activities also, which very essential thing. So regarding, sir, I want to make one important thing to the Honorable Minister. Most of the post offices still has the old building. It is not at all fit enough to have, sir, Honorable Minister, sir, I want to, sir, Minister, sir, yes, sir, I want to make an important suggestion, especially regarding the buildings which the post office is still having is an old building. It is not at all good condition. We have to modern days how it developed our system. We need a good atmosphere and the office must be the proper way. That is not having. Second thing, the rural areas, we have to give employment opportunities for those people through postal department. That has to be taken seriously. Because of courier system, what is happening? They are the competitors. Because postal department lose the income. But if you are modernized and quick delivery system you make, it is more profitable. For example, speed post we are telling, it's not a speed post. Even if you put a speed post, it takes 1 week or 10 days, that is happening there. Therefore, these are things where people are facing because
here you are so many legal remedies are there. Postal department, this sending letters or any confidence thing, it also requires for our legal system also. That is the authenticate thing, what are the letters we are sending. And also, secondly, regarding that privacy thing, whatever democracy is, what everybody said, interception of the postal things for some kind of emergency thing or democratic system, and security thing, whatever the minister said. Sir, that may be there. I accept that there may be fact also. At the same time, you have the confidential thing also, because one person is writing a letter, you cannot intercept such kind of letters. There may be so many things, but his views we are expressing to others means that is, there is no using the emergency thing. You cannot interpret that. That is not a fair. That is one important telling, sir. Therefore, what I am requesting once again, our honorable, because I don't want to make much of the time, because the postal is our great thing. It's still our India has a good prestige. During the Prime Minister period also, so many reforms that took place. I am appreciating that. At the same time, what I requested, Honorable Minister, to see that give the employment opportunity to rural area people to serve there, and also modernize their buildings also, office also. These are things I am expressing. With these words, I am ADMK party, I am speaking. Thank you, sir. Honorable Shri Santosh Kumar P. Thank you, Vice Chairman. Sir, I am so delighted on reading the name of this bill. That is the Post Office Bill 2023. The Honorable Minister did not attempt to change the name into Hindi. He could have done it, I mean, like this Gadishakti Vidyalaya or Nyaya Samhita. So I am so thankful to him for retaining this English name, which is understandable to each and every Indian. Now, let me add a few more points. Sir, all initiatives to modernize the post office system, which is the largest in the world, is welcome, no doubt at all. But we are not in a position to support this bill in the existing form, especially with the provisions of Section 9 and its subclauses. This Section 9 and its subclauses will turn our post office into Pegasus offices. That is the most important point which I would like to raise. Why you link each and every aspect of life, each and every institution with the security of the nation? The security of interest of the security of the nation is a concept which can be misused, and the government has misused it many times. So please leave these poor post offices from the scope of this operation of this concept. So I would like to request the minister to delete this particular provision. Secondly, sir, to modernize the post office system, the postal system, we have to think about the unused postal land also. This department is having acres of land in various parts of the country. For example, if I say in Cochin, they have more than 1 acre of land which is unused. So there must be provisions and plans to make use of this unused postal land. And thirdly, what about the private players in this field? The India Post is having just 15% of this business in this industry, in this area. Just 15%. Others are in the hand, remaining 85% is in the hands of private players. So, do you have anything to control these private players? You are, if you are going to implement this Section 9, then it will be the secrecy has no value, privacy has no value. Then obviously, these customers will move towards private players. So there must be something to control the private players also. So even though we are in favor of modernizing our postal system, this network, we have to take into account all these concerns. And as far as the postal workers are concerned, sir, more than 90,000 posts are still vacant. So you have to take steps to fill up these vacancies as early as possible. Moreover, the wages of these grassroots level workers must be enhanced. And these are the points which I would like to raise, and I hope the minister will take care of these things. Thank you. Honorable Dr. Anil Sukhdevra Bode.
गुलामी की मानसिकता थी, वो पूरी गुलामी की मानसिकता बदलने का काम किया। यानी वो अमृत पथ रहे, सुभाष चंद्र जी बोस की स्टैचू लगाना रहे, या 1898 में बनाया हुआ इंडियन माइक्रोफोन प्लीज। या 1898 में बनाया हुआ इंडियन पोस्टल एक्ट रहे। 1898 से मोदी जी को आना पड़ा कि वो गुलामी की मानसिकता से निकल के नया इंडियन पोस्टल एक्ट, पोस्टल बिल 2023 लाना पड़ा। पोस्ट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाँ, हालांकि अभी व्हाट्सएप है, ईमेल है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन वो बैंक है, लेकिन गरीब लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और महिलाओं के लिए पोस्ट की बहुत ही अहमियत है। लेकिन 2004 से 2014 तक आपको पता है कि 600 डाकघर बंद कर दिए गए थे, यानी ये डाकघर बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 2014 से 2023 तक 5000 नए डाकघर शुरू हो गए, यानी ये डाकघर को पुनर्जीवन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में हमारे काबिल मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव, इनके माध्यम से 5746 और डाकघर खोले जा रहे हैं। अब 5746 और पहले बने हुए 5000, यानी इतने डाकघरों में गरीबों के लड़कों को, लड़कियों को, उनको नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ डाकघर का काम चिट्ठियां पहुंचाना, पार्सल पहुंचाना इतना नहीं है, तो 100 सुविधाएं उसमें ऐड कर दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं मानता हूं कि वित्तीय सुविधाएं उसमें ऐड की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी यानी महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी है, उनकी आत्म सुरक्षा की गारंटी है, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने की गारंटी है। अब इसमें अहम भूमिका जब डाकघर निभाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने लाई सुकन्या समृद्धि योजना, या पिछले ही बजट में महिला का सम्मान बचत पत्र, या डाकिये द्वारा खोले गए, घर घर जाकर खोले गए खाते, ये सब महिलाओं को दे रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई भी व्यक्ति को मिलती है तब उसका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। और आज हमारे तीनों राज्यों में भारतीय जनता पक्ष ने जो विजय हासिल की उसमें सबसे बड़ा रोल नारी शक्ति का है। यानी पूरे भारत में पूरी नारी शक्ति का भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के ऊपर है। ये इसलिए है कि हर महिला को, जिसको समझा जाता था वो दबी है, वो है अबला है, उसको सबला बनाने का काम। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने तो मध्य प्रदेश में जाके देखा, मैं चुनाव के प्रचार में था, पहले ऐसा होता था कि हस्बैंड बोलता था महिलाओं को यहाँ का बटन दबाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो मैंने देखा कि महिला ने बोला, बेटे को भी बोला कि बटन दबाना है तो कमल के फूल का ही दबाना है। उसके हस्बैंड को भी उसने मजबूर किया कि घर में आना है, खाना खाना है तो कमल का ही बटन दबाना पड़ेगा। तो ये नारी शक्ति की पहल जो हो रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के माध्यम से हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, attention to you. First question is, really, every categories of touts in the field of the law have been brought within the ambit of this statute. Is it correct? Tout is there in
everywhere, lower judiciary up to Supreme Court. But these types of bill, practically you are identifying few persons who are in the subordinate court or the district court. What is the real intention to identify the tout? I understand this bill is what Mr. Rajya has said just now, the replacement of the old provisions of the legal practitioners. Nothing more than that. You are taking that colonial. I have no difficulties. But when you are making an attempt to bring this bill, you think broad. There are a number of touts. Sir, I tell you one thing. It is very easy to identify tout who are poor. Among the poor, how much touts are there in the judiciary who are extremely sophisticated? Can you identify? The process you have started, I understand, appreciate. But the reality is this: tout is everywhere. Tout is sophisticated. Tout is there. Tout is here going to 5-star hotels. Tout is there going to 7-star hotel. Tout is taking you in different places of the country. You can't identify that tout because they are sophisticated. They are coming from very big universities. They are having Mercedes. You can't identify that touts. You can't identify. That's exactly I am telling that you are not, this is not a broad, you are not bringing all types of touts. Today when the discussion is there, let the discussion. I know it will not be done now. Think in future about this. No doubt about it. Let me explain myself. What is this tout, Sylvia? You know, sir, what we know about this? We are laws. What are the laws? Statute law. Correct? There is a law, case law. This is the laws are known to everyone. Statute law and case law. Applicable in the court. All we proceed. There is another law, which is called face law. And face law is the important for having an order from the higher judiciary, highest judiciary. That's the practical thing. And for the face law, litigants have to spend lakhs and lakhs rupees. You have to invest 20 lakhs, engage 20 lakhs rupees lawyer, you will get the order. Touts are everywhere. Who are the touts? That's the whole difficulty. Identification of tout is necessary. It is very easy to identify a poor man. He is a tout. A lawyer is a tout. Talking about is a tout. But identify. Take this system, bring this system, introduce a system to identify real tout in the judiciary, in the judicial system itself. It's correct what has been said. It's correct. It's an everyday experience. Our judiciary has become, this is today, India, it has become too much expensive. Too much expensive. Unless you engage a very big face. Very big face in the Supreme Court, you can't have an order. Good money, good law, good justice. Good money, good law, good justice. This is the practical thing in the country. That's going on. What is going on? You identify, sir, I will request you. You have come, you think real tout is where? Real tout is, sir, no one amongst the, even amongst the, there are one grade of lawyers are there amongst them who are trying to, who possess themselves that I am the bridge. I can bring the judgment. I can bring the order from the highest court. I can bring the order from that judge. I can bring the order from that judge. Come here. I will engage him. I will engage him. Don't worry. Sitting in 5-star, everything is settled and everything is getting. He is the main tout. What is the procedure? How you are identifying it? Since you have brought the bill, I have got the chance to speak. And I am speaking. This is I was thinking for
decades together. What is going on? I am a man of practical field. I am looking into these things. And these types of touts I will not tell all the judges, but of course, there are very few judges are there in our country, having a very good relationship with them. In their dinner party, they will go. In their lunch party, they will go. Their marriage anniversary, they will go. They will go. We know everything. Everything is known. Someone speak for 2 minutes law, 5 minutes face. Face law is very important in our country today to have an order, to get the justice. And who is getting that? The rich people are getting, not the poor people. Do you understand? Can you think about this country today, this judiciary is? Why the lakhs and lakhs poor people are not getting justice? Pending before the Supreme Court? Decades after decades. But Supreme Court is very much concerned whether there would be a marriage of the same sex or not. Therefore, Constitution bench will sit and they will go on hearing days in, days out, days in, days out. Peculiar things, sir. Sophisticated pupils, rich people, their problems would be entertained by the Supreme Court. Peculiar thing. I tell you, sir, do you know, this same-sex marriage, whether it will be done or not, within 3 days, bench has been constituted, matter has been heard, everything has been done. Do you know, for long 27 years, 7 judges bench of the Supreme Court is not hearing one matter which really pertains to the poor agriculture worker of the West Bengal. Can you imagine? For whom we exist? Do we exist for the purpose of, whether the judiciary exists for the purpose of resolving the problem of the most sophisticated or a very sophisticated things or the rich people? Sir, I tell you one incident. I am taking your time. I am sorry. Chief Justice Datu was sitting. I was sitting on that day. I will not take the name of a very senior lawyer, very famous lawyer. He went and he wanted to mention a matter of one industrialist. I must say, Chief Justice of India, Datu said, Mr. So-and-so, I have a number of matters of poor workers and poor peoples of this country. I don't have time, simply because you are appearing for the top industrialist, leaving aside everything, I have to take up your matter. I have heard it. But today's approach is different. Peculiar. I am not taking any name. Big corporates. Go, big lawyers. Give big lawyers. Go, mention, his matter will be taken up. What is happening in our country? Poor people are ignored. This is the place. That's the, sir, I must say, this is going on. Sir, point is identified tout and non-identified tout. You are here, mayor making, you are trying to identify the tout. But the big arena, big places are there, big field, where non-identified tout is there. Nobody will tell them. Because they are not taking tea in the street shop. They are taking tea in the 5-star hotel. Therefore, they will not be identified. Sir, identification, how can you remove? Highly paid lawyer comes out. They accept it. Don't worry. 50 lakhs. Don't worry. Get the order. Order is coming, engaging someone. He is not there, engaging someone. And that's because of face law. Come. This is happening. Tout is there. Tout is also there today. This problem is.
I am coming to a very relevant question now. Doubt is there when relatives of any judge is in the field of practice, legal practice. Doubt is there. Taking the name of the judge, relative is also holding out threats. It has come into the newspaper. I do not want to take. I do not want to take name. It is coming in the newspaper. It is under investigation. Let it be investigated. So since I have got the chance, I just tell you. Sorry, I just want to tell you one thing. I don't have, the Honorable Law Minister, I don't have any difficulties regarding any transfer. I don't have. I want it. I wish it. Why I want that there should be a policy. Unless a policy is there, transparency would not be there. Whatever is the policy, you transfer anybody. How? I am not concerned. Give a policy. At least 140 crore people of this country will understand this is a policy. On that basis, transfer would be made. But today, what is happening? Picking up, transfer. Picking up, transfer. If relative is practicing, for that reason, transfer all the judges who relatives are practicing in any high court. Why you are bringing a judge into the Supreme Court, High Court to Supreme Court, knowing fully well that his relatives is practicing in the Supreme Court itself? Why? Why picking up the names? If I am unfit, if I am dishonest, if I am not fit for anything in any court, I am not fit, I am not for any other high courts also. Point is very simple. Then again doubt comes. No. Doubt will say, this is the problem that has to be addressed. Of course, I support, sir, your bill. But I am on a very larger issue to save the Indian judiciary for future generation. For future generation. I am almost at the fag end of my career, legal service. How much years? 8 or 10 years, how much? But save it for generation after generation. The pain which I have faced, the things I have seen, problem is this, I have told somewhere, the judges, why they are saved? Supreme Court judges, High Court judges. I can criticize, only here I can criticize because of the privilege of the Constitution, because of the existence of the Contempt of Courts Act. Because they can't criticize, no one can criticize any judge's activities, judge's thing. Otherwise he will be hauled up for contempt. Our judges of the country are saved only because of the contempt of court. Don't think everyone is perfect, everyone is correct. There are so many persons. I take it, I used to take it earlier, it may be some aversions. Sorry, today I don't take it. It's an aversions. It has become a great disease of the Indian judiciary. That disease has to be resolved. I know, you are having a limited power, limitation, I know. But this is the field, this is the place where I can tell my words. Let the highest court of this country take note of the contents which... Shri N. Redappaji, please send your name, then I will give you a chance and then you will speak. No. Thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity to participate in this discussion. To introduce the Advocates Amendment Bill 2023. Please. There is nothing to oppose in the bill. I fully support it. This is a welcome step. Advocates for the important part of judicial system
They are not only the officers of the court, but also from the important bridge between those who see justice and those who are empowered under the law to give justice. These amendments of Advocates Act were long pending and bring about a critical reform in the justice delivery system of our country. The importance of these amendments cannot be understood, and while these amendments are important, questions can only be raised as to accept on the consultation behind empowering the state agencies to act against liars, and secondly, the enforcement of a mechanism that will be required implement of this law. This is because while we want to that so-called Munnabai liars punished procedure also be brought about the ensure that there is no unnecessary prescription of any genuine liar, and through these amendments the independent judiciary is not hindered with, sir. One of the most crucial important of the justice delivery system in India is its human resource element, which is the advocate. The role cannot be overstated in the whole process. The act as bridge between the aggrieved and the adjudication institution. They also play an important role in shaping our society and not forget their role against courts to arrive at several judgments protecting the environment, sir. In 2017, two years ago, verification of drive by Bar Council of India found that only 50 to 60% practicing lawyers in India were genuine. This number was heavily reported in media. There needs to be a single public register for advocates across the country, which can be accessible by the public to across verify the claims of education, qualification for each advocate they wish to engage with, sir. Advocacy may look like a very glamorous profession, but for those who are in public practice of law, it is for them the truth, sir. The Advocates Act needs to be further amended to ensure that certain benefits of social security are also extended to the junior advocates, and to ensure that advocates of the profession can retain the best talent in that there is no profession regarding this. I would like to suggest the Honorable Law Minister to take steps ensure that first generation of advocates are also be benefit from the targeted government schemes for health and housing and other methods of to them to be able to earn respectively for their livelihood, sir. Despite of the important attached profession, these are not concentrate measures to place to ensure their social security, sir. Even new lawyer in New Delhi has to pay around 15,000 rupees for enrollment fee at Delhi Bar Council, charging fees beyond that what is prescribed under Section 24, Subclass 1, Subclass F of the Section Advocates Act 1961, violate the right to equality under Article 14 and denies opportunities the uprising advocates. I am requesting the Honorable Law Minister regarding enrollment fee of advocates. They are not in a position to pay advocates fee also, sir. In this regard, central government has to take some steps to provide minimum financial assistance to the rural advocates, particularly to construct their houses, to have bank loans, and to pay enrollment fees and etc. Sir. Regarding in Andhra Pradesh government, our Honorable Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy is giving 5,000 rupees each junior advocates, all the advocates in Andhra Pradesh in every month, sir. There we have to appreciate the Andhra Pradesh government also, sir. Apart from this,
I am requesting the Honorable Union Minister to strengthen this Amendment Act and also to implement the ideas of Dr. B.R. Ambedkar which are in the Constitution. Union government has to take steps to introduce All India Judicial Service to implement particularly to appoint judges in all the courts, including Supreme Court, to at least when All India judicial system is there, they are going to impartial like IAS, IPS people, they are going to render some service to the rural level people. Otherwise, people from expected clients, they are not able to get justice from these courts. Therefore, I am requesting the Honorable Union Minister kindly introduce All India Judicial Service in the country. Apart from this, regarding touts also, touts anywhere, any court, on all the department touts are there. It is not possible to curb them. It is not possible to us to take any action against them through law also. In this regard, the Union government has to take steps how to curb the touts system in all the systems, in all the governments in India level. Therefore, thank you very much for giving me the opportunity, sir. Shri Bhartaraji Mehtab ji. Thank you, Chairman, sir. At the outset, I should make it very clear. The bill is relating to advocates. Bill is not relating to courts or high courts or Supreme Court functions. Our attempt while deliberating on this amendment bill is to strengthen the advocates of our country and the system of jurisprudence in our country. This advocate amendment bill clearly mentions two things. One is to repeal all obsolete laws of pre-independence acts, not totally, but which have lost their utility. This should be borne in mind. All the law is not being abolished. Those laws which have lost its utility are being removed. And Government of India is doing this in consultation with Bar Council of India. So these two things have to be borne in mind when we are deliberating on this subject. We know the history of Indian High Courts, how it was formed by an enactment of British Parliament in 1861, and subsequently what development has taken place in between. While going through the bill, sir, the definition of tout is also given. A tout means a person who procures in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner. The employment of the legal practitioner in any legal business. This is the first part of the definition who the tout is. But subsequently, in the second subpara it is mentioned, the purpose of such procurement frequents the presence of civil or criminal courts or of revenue offices or railway stations, landing stages, lodging places or other places of public resort. So in that respect, it has been very clearly mentioned in the bill that those touts who operate for lower courts, they need to be apprehended, they need to be named, they need their names to be published, and they can be prosecuted. The impression of the government is, or the earlier law was, that touts do not exist in high courts. They don't exist in Supreme Courts. We should not presume that touts do exist. But my only humble suggestion is that a beginning is being made. It was there in earlier enactment, which is now getting incorporated in this amendment, in the Advocates Amendment Law, through this bill. And the best part is, the previous law which was there, now one cohesive law is coming into existence.
This was introduced in Rajya Sabha last August. It was passed in also Rajya Sabha last August. It amends the Advocates Act 1961. This bill repeals certain sections related to touts under the Legal Practitioner Act of 1879. The bill provides that every High Court, District Court, Session Judge, District Magistrate and Revenue Officer not below the rank of District Collector can frame and publish list of touts. This bill makes the act of tout punishable. Means cases can be filed against them, they can be apprehended. But there are two aspects on which I would like to deliberate. One is the practitioner or the legal practitioners, the advocates, what need to be done for them. And the second is about 45, Rule 45 also is mentioned. That is relating to regulating legal education. That also needs to be looked into, which has not been addressed in this bill. There is Rule 36, which imposes 3 primary restrictions on lawyers. Firstly, lawyers are not allowed to promote themselves directly or indirectly. Second is, if a lawyer is involved in a case, they cannot advertise themselves in the media, newspapers, display their photo, or make inspirational comments. Question is, who is going to question the lawyers? Who is going to lodge a complaint against this type of dereliction of duty? Our expectation is the Bar Council of India will take cognizance of it and will deliberate on it, will take action on it. But are they doing that? During last 20-30 years since the inception of Bar Council of India, how many such cases has been deliberated by the Bar Council? Not a single complaint has been lodged, or has it been lodged and it has been glossed over? In consultation with the Bar Council of India, government is repealing the Legal Practitioners Act of 1879. Now the legal profession will be regulated by a single act. It is their responsibility to have quality lawyers. Section 36 of the 1879 Act is incorporated in the Advocates Act 1961. Some suggestions I have to make here for consideration of the government. Reform is a continuous process, and it has to be done with due enough time. There should be provisions for professional development of the lawyers in the Advocates Act 1961. There is no such provision even today, that how professionally an advocate can enrich himself. Technology has become all pervasive now. There are many emerging frontiers of law. Law to regulate telecom sector, law on intellectual property rights, Arbitration Act are some of those. Now, online dispute resolution has become a practice. Lawyers need to update with the latest development in the field of technology. Shouldn't we bring in these aspects in our amendment? How to legalize, how to make them more professional, that aspect we are missing. There should be, I would suggest, there should be, government may consider, there should be a national electronic register for advocates. Anyone, anywhere in the country can sit down and find out who are the advocates. Why should they take the help of touts? Or why should we presume that without a middleman we cannot approach a lawyer? We do not have any such register. The Law Commission in its 184th report had suggested as such. There should be a single database. This would be good to bring social welfare schemes for the lawyers also, because you have a single database of the whole country. There should be a digital interface
between the advocates and the clients. This will eliminate the need for Section 45A in itself. Why do we need middlemen when we can have an electronic platform that can connect advocates and clients? I have a query also. Do we need intermediary that is being incorporated as Section 55 in the Advocates Act after repealing Section 36? When we have digital interface, is this provision necessary? Finally, I would also for an Advocates Protection Act. Since states have enacted such law, Minister for Environment, Forest is also present here in this house. Rajasthan has enacted that law. The present law minister is also from Rajasthan. Rajasthan has enacted a state law. I'm not aware how that law is functioning and how much protection this advocate protection law has given. But I think it is necessary because at times we also come across number of news where lawyers are attacked or lawyers are threatened or intimidated. Advocates need to practice fearlessly. The advocates, after all, are officers of the court. They are important stakeholders in the administration of justice. I believe the suggestions given shall get utmost attention of the government. The other part which I would like to mention is relating to the academic, regulating the legal education that needs to be strengthened. Large number of law colleges are being opened. But what is the quality of the lawyers? We all know. When the quality of the lawyers that are coming out from the law colleges, it is not only affecting the bar, it is also affecting the bench. So keeping that in mind, I think it is of greater need to look into these aspects also and to bring a comprehensive law in favor of the advocate and our advocacy system. Thank you, sir. Shrimati Supriya Suleji. On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here to speak on today's bill of the Advocates Amendment Bill. Sir, Meghwalji has been a colleague to all of us and a pleasurable colleague for a long time. And he was the colleague who brought in the Women's Reservation Bill. And he's really lucky that he has brought in a bill, though it's not implemented. But he's lucky that in his legacy that he will leave behind, he'll be one of the finest ministers who has brought something which was very close to our hearts. And I'm not taking away his intent of this bill which he has brought in. I have only a few suggestions. I'm not a lawyer. Most lawyers have spoken before me. But the intent of the government, I'm sure, is very clear about what they want to do. But I have a few suggestions and questions to ask them regarding the implementation of this bill, which is actually really small. But there are a few questions I'd like to ask the Honourable out of my lack of legal knowledge. Is this that he says, what is a tout? Now, Mehtabji has spoken about it, and so has Sri Rajya from the DMK. But I seek a clarification from the Honourable Minister that he says that, which already Mehtabji has read, that who procures in consideration of any remuneration. So it's a one-sided thing, any remuneration. So it's a one-sided thing. See, in the Corruption Act, both parties are considered to be making a mistake. Here, you are only considering one party to it. So should we not make it broader? And whoever engages or whoever hires, both ways, I think the practice is wrong, right? So why should only half the person be punished? So if you are really trying to remove touting completely, why not include both the parties, is my question. So if he could kindly clarify on that. The other question for me is that who are the members present at every meeting? There is no clarity of it. In 45A, they've written that the explanation is the majority of members present at the meeting. Now, who will be the members? Who will decide what will happen at the meeting? Who will decide just with such a small thing who is a tout and who will be taking the decision? There is no clarity about this.
Now, this is like Raja ji said, I'm reiterating the point, but there are no objects in the bill. It's probably little, I mean, it's a lawyer's bill which has such poor drafting, unfortunately, because there is, bill has to have its objectives. So there is no objectives in this bill. So what is the real reason of getting this bill? I'm again not taking away from the intention of the government. I'm sure the intention is, but when you are doing something for lawyers, isn't drafting and implementation most important than not just intent? Life is beyond intent. The other thing is about reforms which Meghwal ji said. Sir, I have never dealt with lawyers in my whole life, but in the last 6 months, I'm flooded with lawyers in my life, be it Election Commission or Supreme Court. And there is a saying in Marathi, sir, if with your permission, I would like to say it, that in Marathi they say, जो होशियार होता है ना, वो कभी कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ता है. जो होशियार है, तो कभी कोर्टाची पैड़ी चढ़त नहीं. अभी मैं होशियार नहीं हूँ, अभी मानना पड़ेगा, मैं तो चढ़ चुकी अभी. There was no option. So I had no option but to climb it. And clearly when you go to court, there are a lot of issues that are raised. The tout issue is discussed. But my whole point is there are a lot of reforms required in the court. I mean, justice delayed is justice denied. I don't want to go there. I know that's not the purview of the bill. But even one major point is injustice anywhere is a threat to justice everywhere is what Martin Luther King has said. So I think this is a very broader role that we need. We really need to expand this bill. The course of this bill, which whenever we meet young lawyers, anywhere we get, you go to states, like somebody from YSR Congress, Jagan Mohan Reddy ji's party said that they are giving 5,000 rupees a month to young lawyers. In Kerala, they give, I think, 2,000. So is there something to engage all these youngsters who are studying very hard to pass it? So is there some social program this government has in mind, like most states are doing? That is my first question to this government. To reiterate, which technology upgrade? I think with technology, so many things are happening now. So is the entire game for lawyers going to change in the next few years? So how do they skill themselves to better? I mean, this whole thing about colonialization has been discussed. So it's a past, it's okay, good or bad. I think it's not been that bad on it. So let's not just criticize our history. The way forward is change, and change is inevitable in everybody's lives. And that's what policy is also. Policies also have to change with time. Look at the life today, something like artificial intelligence, something we didn't even expect. A mobile phone we didn't expect about 10 years ago in our lives, which has actually changed our lives. So every profession is changing. So are the lawyers. So is there something this government has in mind for technology upgrade of all the lawyers? The Protection Act, which Mehtab ji talked about, I'd like to take it a little forward, that many governments all over the country, not just talking about advocates, but they are even talking about doctors and press safety and security, because somehow I do realize, and we must all put our minds together in this government and in parliament, that there is somehow so much anger in society nowadays. I don't know where this anger is coming from, sir. Even in Maharashtra, we are having a lot of challenge. I'm not trying to digress, but I'm just giving you a small example. Please don't misunderstand what I'm saying. There are a lot of agitations going on in Maharashtra today on reservations, sir, be it Maratha, Dangar, Lingayat, Muslim Arakshans. A lot of stone pelting is suddenly happening. So there is clearly some anger breeding somewhere. You hear doctors getting beaten up. You hear threats like Mehtab ji said about lawyers. There are press people who are getting beaten up. So there is something missing somewhere, sir. I think this entire House Parliament with legislation, we even need to discuss all these social issues, because the intent of changing people's lives for the better is why, that's why we get elected and come here. So at policy level, the intent of the government to bring in to removing of the touts is a very welcome step. Sir, the only thing when I was hearing about touting was, आपको भी याद होगा हम लोग सब थे, तभी तो मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, तो वो टाउट्स खड़े रह के वो टिकट सिनेमा की बिकते थे, 10 रुपया का 100 रुपये में टिकट, अभी वो iPad वगैरह नहीं था. That whole touting business is over, because first day, first show, life out of us is over. So technology does evolve life, so it will probably eventually do remove touts. But till then, can we do something better, which is simpler, positive, and like Meghwal ji said, Raja ji said, I would like to reiterate their points that why not bring a compressive bill, bring it, we could put it into the law ministry. The law minister is very fine, he's very supportive to all the demands of women that he did for us in the women's reservation bill. So I'd request him to take this back. Let's all take all the points suggested by all the renowned lawyers in this house.
bring a more comprehensive bill, take all the feedback, maybe send it to a standing committee. There are good lawyers, even in the, I think the environmental minister is also a lawyer, if I stand corrected. Maybe some feedback from him also as a lawyer, and have a more comprehensive bill in the larger interest of the advocates of this country. Thank you, sir. Shri K. Sureshi. Sir, give me opportunity to participate in this bill. Sir, let me begin by quoting Mahatma Gandhi ji, who himself was a lawyer and an ardent champion of justice. An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more, so states Gandhiji. The quote means that any law must be aimed